Hi. I'm sorry. No, it's ah, okay. Yeah, I was trying to find the what pad link. Sorry. I'm so sorry. I was trying to find the Wattpad link. I couldn't find it anywhere. I was searching my Discord and I was like, "Koi mere ka link bhej do." But then I was like, I just Google searched and I was like looking at all my history. Ki kahan gaya link, and I finally found it. Yes, I was doing that and I got laid because of that. क्या करना था मुझे? हाँ. I had to show the how do I adjust it? Okay. So, yeah, I got bunny ears. Hi. Yeah, you know why I got bunny ears? Because apparently, mere jo thumbnail mein, I got buck teeth, right? You saw the buck teeth on my thumbnail? Yeah, I saw. I thought maybe I should just add some bunny ears to it. I think that would suit me altogether. So, yeah, yeah, that's why I did it. Now I just need carrots. I need carrots. Oh damn! I forgot to send you the image of the cake I made. I made an orange blueberry cake. Wow, short term memory loss meri. Yeah, Princess Xeno, I'm great. How are you doing? अक्टूबर को मेरा बर्थडे है. अच्छा ठीक है, अक्टूबर को आता है ना, तो अभी हैलोवीन तब कर लेंगे. I mean, I'm sorry, Trisha said birthday, but we'll celebrate it then. Okay, I will do it then. Today. I won't forget to wish you. I won't forget to wish you. भाई मतलब सोचो तुम एक वीट्यूबर को बोल रहे हो कि फेस रिवील. Why? Why would you ask a VTuber for face reveal? No, bro, there's no face reveal. तुम्हारे बर्थडे को 9 days बचे. Nice. आज किसका बर्थडे है वैसे? मैंने बर्थडे चैनल चेक नहीं किया एक्चुअली आज. Nowadays I'm not really on birthday channels. Oh damn. Where is the birthday channel gone? या मतलब कभी-कभी वो एकदम मतलब गायब हो जाता है channels मेरे लिए. I see the story time channel. I see the birthday. But anyways, is anyone's birthday today? किसी का है तो बता दो तो करो यार. लाइफ में विश कर दिया करेंगे. Yeah, it's Bonnie. It's Bonnie Xeno today. And where's everyone? कल live alone का birthday था. Live alone. Oh, sorry, live alone का. अच्छा, where he's? Well, he's not here in the live, so can't wish him, but well, happy birthday to him if he was there. But yeah, 13th April को. Yeah, हाँ मेरी बात ही 12th को मेरा, आपका 13th का. वाह nice. Okay, wow, they're like none of them are here, so I can't. But yeah, I feel like everyone's too busy. Is everyone too busy? What's happening? Hello, Tenzing. Hello. My day was good. It was pretty relaxing. I got up late around 10:30. I then ate my food, took a bath, came back, read something, and made a cake. I made a cake. So yeah. 29th February को इसका बर्थडे है. भाई मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का बर्थडे था 29th को. तो honestly it's funny because we celebrated on 28th as well, but मेरे हिसाब से तो 4 बार के बाद ही करना चाहिए. WWE में कौन सा स्टोरी लाइन अच्छा लगा था? भाई मैं कह तो रही हूँ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ WWE. जितने नाम याद थे, बस नाम याद थे. बिग शो, जॉन सीना करके उस टाइम पे. एंड नो, आई नेवर सॉ एनी स्टोरी लाइन एज सच. माई कज़न, और आई टोल्ड यू अबाउट दैट, माई कज़न यूज्ड टू लाइक WWE a lot, and he had collected cards and stuff. I'm not a fan, so I just knew about it. That's it. Yeah. So that's what I can say. And
Okay. So I was waiting for people to come, but I don't see a lot of people, so I think we should just begin. By general kahan gaya? Huh. So I don't see them here. So should I begin or should I wait? I don't know what to do. Should I wait for them? Should I begin the storyline? और 1 मिनट ये अपडेट हुआ था 6 चैप्टर आई मीन हम लोग 1 मिनट और मुझे ये याद भी नहीं है 6 चैप्टर ही था ना Wow, my YouTube is tweaking. I cannot see what's going on. Somehow is it just me or it shows like one person watching? What are you talking about? Wait, okay, I'm confused. Anyways, TK, so the first thing I should probably do is first show the artwork. I got 2 artworks, so I'm gonna show them first. Yeah, first I'm gonna show the artworks that I got. First is the one, because I don't see him here, but I'm still gonna show you the art. I'm still gonna show the artwork that the person sent. Cause wait, I'll have to adjust the scene. I just adjust. Wait, I go there, and I show the artwork. Okay. Okay, so there's one artwork that I got from SP, and he then wrote a message saying, I forgot what he said, but Kar do. I did not Sai, I did not see. Man, a photo from your sister. Oh, that's cute. Tag me. I downloaded it. मैंने 3 download किए हैं Sai. 2 are from Blue Alien, my cousin from Blue Planet, and the other is SP. So tag me if it's there. I'll just go to the channel. I'll go to the art channel and I'll see if I can see it there. I think I missed the one. I saw Mainless का last देखा था मैंने. And what a nut, bro. And कोई मैग्नस को बता दो यार, मतलब NSFW वाला मत डालें यहाँ पर हटवक चैनल पे. But yeah. So this is the one that he sent and SP made. This is apparently we describe it as evil Xeno. Keep it right there. So I pretty much I do like it, to be honest. Okay, give me a second. Hey Manul, oh my god, Manul, that's a long time no see. How you doing? Oh my god, it's been a long time since I saw you. What with the bunny ears? Yes, I got a bunny ears. It's because I think I told you guys were in there, but people are joining pretty late. But anyways, I think I have to say it again and again. But hi Rebecca, hi Aquis, thank you so much for joining in. So I basically so I saw on the thumbnail, I saw I had buck teeth, and I thought I should just add only thing that was missing from that thumbnail art was I was missing my ears.
and I thought maybe I could put it up. Yeah. Hello, Aquis. Just being busy, no problem. एक बार एक चीज़ कंफर्म करनी थी मुझे कि वर्दी which is the new क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं Wattpad. Yes, Wattpad. Is it the 6th chapter था ना जो update हुआ था? As far as I know, it's the 6th chapter, right? एक बार confirm करना, because I keep forgetting and I'm not able to like, because last time हम नहीं कर पाए थे Wattpad and I have forgotten where the storyline. As far as I remember, Lost Kid and Xeno, they were like they're gonna get into a fight, but forgot actually. So, okay, so chapter 6 is a new one. Okay. Hey Pama, thanks for joining in. फेवरेट के ड्रामा, यार देखो मैंने के ड्रामा ज़्यादा देखी नहीं है, पर जितने देखी उसमें से मुझे K2 बहुत अच्छा लगा, simply because I wanted to watch it because of Ji Chang-wook, because he's very handsome, and so because that's the reason I saw it. उसके अलावा there's one that I saw, it was really women centric, it's called WWW Search. I love that. It's a pretty cool storyline. I like that. It talks about like agencies that run search engines and they're in a competition, but it shows like really strong women. So I saw that. K-dramas में से और I haven't seen any of the popular ones. जैसे मतलब if you expect me to say like Squid Games or for that matter stay with together Goblin, I have not seen those, so I'm not gonna say, I don't have any opinion on them. I've probably seen less watched K-dramas. I've seen one, एक मैंने देखा था, only because the fact that it talked about you know, I just watched K2 because it was action, so that's why. Check moving K-drama. मैं भी search करती हूँ. Moving K-drama. Is it? What's it about? It's an action series as far as I know, and their school students are involved. No. School students are involved. Oh my god, I hate, so I know that most of you guys are school students, but I'm sorry. Anything that has like school students in it just, for me, it's the same old thing. I'm not. And then there's one jo abhi bahut famous hua tha, wherein this spy guy, the spy goes to school, I think. So शायद वो, I'm not. Weak Hero, मैंने उसके बारे में काफी सुना है. Weak Hero. I've heard about it. It's a Weak Hero class 1? Is that the one? Strong Woman Do Bong Soon ka maine Instagram pe reels dekha tha. It's kind of funny. It's pretty funny. It shows like this girl who's like so strong. I saw this scene where, I don't know, she has like a pair of chopsticks and then she basically just slams it on the table and it goes through the table, and I'm like, oh bro, I like that. That is pretty cool. I would want to meet that woman. But yeah, I think I mean, how many episodes are there? I don't want to watch long series. It's just too get boring. I mean, after watching anime, mujhe literally all these people with live people, like in actors and stuff, it just gets too boring. So yeah. Guy can float and girl can self-heal. Guy can float and girl can self-heal. Oh! Multi-storyline parent spy storyline. Bro! Spy Kids yaad aa gaya mujhe. Spy Kids. You remember Spy Kids? Did anyone watch Spy Kids movie? That was my favorite childhood movie, Spy Kids. Junie? Corman? Anyone? No? Yeah. And I like the guy from Spy Kids. The bad boy. What was his name? Wait, Spy Kids characters. There was this character of Spy Kids. His name was, what was his name? Junie Carmen and the other guy. What was his name? What was his name? They were a pair of bully kids, like a pair. There was again a brother and sister, but as like Junie is small and Carmen is big, but in the other pair, the boy was the elder. What was his name? I forgot. What was his name?
Billy? As by kids. 2 characters, yes. Gary Giggle. I searched it up. Gary Giggles. Oh my god, I found him really cool. He's a bully. But anyways, Hindi dub mein bhi aata tha. Achha. My dad got a CD. That's how I saw it. Shark Boy and Lava Girl. I remember that. And then मुझे बाद में realize हुआ कि भाई उसमें जो Shark Boy होता है, that's Taylor Lautner, right? And Taylor Lautner plays the wolf guy in Twilight. Shark Boy, Lava Girl. It's Taylor Lautner, right? And I was like, Shark Boy is Taylor Lautner. And I'm like, whoa, bro. He plays the wolf guy in Twilight. I'm like, what? That's where he started his career. Buddy Daddy's देखा है. It's the most cutest anime I've ever seen. I love that. I love that. And honestly, Mr. Ron, the dynamic है, the two guys. I mean, I love that. I go with the storyline, of course. There are a lot of fan fictions about them, but I was like, no, let's stick to the storyline. And it's pretty cute. I love it. I absolutely love, especially the playground scene. I just love it so much, where the girl just slowly she feels that she's not enjoying it. Oh my god! And that scene where like the dad's not happy with the girl getting in contact with the boy, even though they were exercising. He was like, no, I don't like that. That's not good. No, less contact. And that's typical of fathers. But yeah, that was really nice. I loved it. Favorite romantic anime? I do not like romance. I don't. I'm not a fan of romance at all. So I don't have any favorite romance. Tell me if अगर कोई मतलब action हो गया, shonen हो गया, mecha हो गया, उसमें subplot होता है. For example, Macross में subplot है about romance, but ऐसे I don't watch. Yeah. So, talking about this art by SP, it's basically बोल तो दिया नहीं है मेरा favorite. Okay, guys, another thing I think everyone should be aware of the fact that I do have Nightbots on, and anyone who tries to spam will be chucked out. Their message is going to be chucked in, so let's behave. And we're going to keep our comment section very clean. No, well, anyway, you guys don't do that, but there are some elements who come and do that, so yeah, that's going to happen. And my mod team, of course, they keep an eye, so yeah, let's keep a track of that. Yes, talking about this art particularly जो SP ने बनाया है, मुझे लगता है कि if I was a villain in Ben 10, this is exactly what I will look like. Tell me if I'm wrong. Guys, this art, talking about this art, this looks like me in Ben 10. Like Ben 10, I'm not even kidding, bro. That's literally, if I was in Ben 10, this is how I will look as a villain. Yes. I totally feel that way. I don't know what you guys feel, but yes. I love this art so much. SP's not here. I'm sure he's busy, and I think he said I won't be here. I won't be online for some reason. I don't know. But dude, thanks so much for this art, SP. I think this art definitely alien villain from like Ben 10. Yes. This is if I were in Ben 10, this is what I would look like. Ha. Yeah. Okay. I think next art that I saw. Sai, did you tag me? Did you tag me in it? You told me, right, that there is an art by your sister. I want to watch it. I want to see it. Where is it? Let me see. Have you tagged me? Art channel ke liye. You have. Oh my god, this is adorable. There's no way. How old is your sister? Sai, how old is your sister? If I'm allowed to ask, you can totally say I am not answering. It's totally up to you. You can keep it to yourself. I'm just asking because this art looks so professional. I mean, no, I'm not kidding. When I say professional, I mean the shading's pretty cool. So that's why. And there's another that Lee made. Ooh, okay, interesting. Okay, a working Xeno. Okay. Interesting. Okay, I'll show all the art. She's in 7th grade? No way, bro. No way did your 7th grade
sister made this. This is incredible. Okay, I'll show one by one. This is by Blue Alien. This is by Blue Alien, and I totally wait. I'm gonna keep it in a place where you guys can see it because I'm gonna have to. Yes. Yeah, that's me. Okay, let's Blue Alien, I'm gonna just like crop it so that I can zoom into my art. The background's a parking lot where I think I murdered someone, but no, let's not say that. But yes, oh my god, this is, I mean, imagine this is chibi me. This is chibi Xeno gangster. I mean, I'm not imagining, I don't know, I mean, I'm not pressuring you, cousin, I'm not pressuring you, but what if, like, I now want to know how I will look as an adult, because this looks savage. I mean, even chibi me looks just so savage. This is like Blackpink. Pretty savage. Hey, Quadlars. Hi. Hello, Xeno. I'm Aquis from another account. I'm not spamming, but still got blocked. Okay, but it's okay, Quadlars. You just need to just maintain. If it's okay, don't repeat your words, because my Nightbot, if it sees you repeating one word, if you see Xeno, it's gonna delete you. So keep track of that. Yes, because my Nightbot has become extremely strict now. So this is so adorable, and I look at, and especially look at my expression. Look at my expression. It's so adorable. Wait, let me just shift a little more so then I can. I mean, look at the details, guys. This, I mean, this is so adorable. I mean, I especially wait. I should come in front of you. Yeah, right. Okay. Yeah. No, the art. Yes, better. So if you look at this is so adorable, especially the mouth part where I'm like, I don't know if I'm pouting, I guess. It is so cute. This is, you put so much effort in it, really, and this looks absolutely adorable. This is going on my thumbnail next fan art, next fan fiction Friday thumbnail is gonna have this. It's adorable. And I have 2 earrings. Oh my god, I have 2 earrings. Then I got a scar on above my eyebrows. And then I have like one eye shut like Zoro. And look at the details of my, oh wow. And I got those, wait, what do you call them? I think it's, okay, this is, oh, you call them sandals? I think. And then there's my katana. This is adorable. This is very cute. I think this is very cute. Do you accept art which has... Comment किधर गया? यार उसने कुछ बोला था. Minion, say something. I'm so sorry. My Nightbot is extremely strict. Oh my god. यार मेरा Nightbot तो बहुत ही strict हो गया. वो तो मतलब लोगों को निकाल दे रहा है यार. Blacklist कर दिया. No, what is happening, guys? Oh my god, my mods, look, you cannot, don't have those. He said something, I don't know why. Why did it happen? Nightbot ko kya ho gaya yaar? Was tweet kar raha hai. He's like eliminating so many people. This is not how it's supposed to work. I'm gonna shut it off then. Kya yaar? What is my, now why is my Nightbot behaving like a bully? My Nightbot is behaving like a bully. Should I switch it off for some time? Because, like, I'm gonna miss out all the comments. My comments are gone. My comments are gone. I'm gonna switch it off. Should I switch it off for now? Because I can't see comments. We need to do something about it. Because it's like, it's totally just not... Okay. Forget it. Yeah. I did it. It's being a bully to me. I will not allow the Nightbot to bully me. Or my Xenofam. Yes. Okay. Yes, you were saying, pehle comment paro. Do you accept art where it's drawn on paper but sent as an image? Of course! I'll show you one that's I sent. I'll give you an example. You can totally draw on, it doesn't have to be digital art. It depends. So, mere jitna bhi art hoga, you guys can send any art, everything. Yeah, Lee, because it's, I mean, there are people, Nightbot is throwing people off my damn channel. What the hell, bro?
It's just not happening. I'm not gonna allow it. It's so. So where do I send it, minions? Have you joined my Discord? Wait, I'll show you my Discord. So my Discord has an art channel where you can send your art. It's right below. It's the channel. It's like the header is called Arts and Memes, and if you go there, there's like an art called the channel called Art Channel. You don't have Discord, then you can mail it to me. You can see my mail on YouTube. Is it available? It should be there. Oh, damn, मेरा लिंक नहीं है यहाँ पर. मेरा मेल पे आप डाल सकते हो. So yeah, you can totally mail it to me. So this is like fan fiction and fan art Friday. So that's the reason why I wanted to show all the arts that I'm getting. Hi, Romboy. Thank you for joining in. My God. So let's see. Why? Wait, I got a text. Yeah, I mean, why is Ninebot being a bully? I will not allow it. It shall not do it. Okay. What's your Aj rabbit bunny? Yeah, I'm a rabbit. I'm a bunny. Okay. Yes. So the art. We're talking about the art. Damn. And decided to guess. So I told Blue Alien to put like gold details on it, and he did exactly that. And I mean, I love it. I love absolutely everything about this art. Everything about this art is just so adorable. Okay. Now we should show you the second art. Wait, favorite action anime. My favorite action anime, if I can recall non-mecha, then it has to be like Naruto, Bleach. And if you consider JoJo, then yes, Shonen, JoJo's Bizarre Adventure. Another art by Blue Alien, Makozon. This one has a lot of people. And, oh wait, I need to expand it because there are like multiple characters there, so I need to make sure all the characters are visible, and I have to enlarge it, and I'll just yes. Okay, again, this is me, but this is like, okay, so this, as I told you, I need to know ki kaun hai, to be honest, because remember this. So this is me, and this is the black dragonfly. I think we went for the villain jo group tha, uska naam black dragonfly hi rakha tha shayad. You're going to bed early? Okay. Good night. Have sweet dreams. And so ये swordfish है. क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी. ये lore है Anshu. This is me as a villain. Not a villain, but this is gangster Xeno story. जो Mr. Ron लिख रहा था. And this is like this is where I basically become a leader of a gang. And Anshu, this is me. Chibi version. This is a chibi version art, and this guy is the villain, the head of the villain, the oldie, and this happens to be his supporter, the one with the mask, and he looks pretty cool, but he looks like he needs a stick to walk. I guess my swordfish is old, so he needs this stick to walk. So I think that's why. But yes, so this group is called Black Dragonfly, and I like the symbol that he put. I mean, this is, Blue Alien, I think this is pretty cool. Blue mask guy is me. Eyes are OG. Okay, Blue Alien, you want to be my rival? Now you want to be part of Black and Dragonfly? Okay, bro. All right then. Okay. I got it, Blue Alien, cousin. I think कोई बात नहीं. चाचा के लड़के भी थोड़ा हो सकते हैं, थोड़ा rival. Chacha is also and Chacha is never faithful to the family, and I'm sure that Chacha का बेटा भी नहीं होगा faithful. Definitely. Your rival is confused about his role. Yeah, he's good. He's like, no, I don't think he is, but yes. So yes, this is pretty cool. Dragonfly. I like it. And on the other side is my team. Now I'm excited to know this is Purple Rose. This is my side. And I'm actually totally trying to understand who the female and the male is. Kaun dono, but they look cute.
But I don't know who they are. That's like the chibi version. So yeah, so this is the my rivals, and this is definitely this is my team called the Purple Rose, but I don't know who the characters are. अभी तक ये नहीं पता मुझे. या ये नहीं पता minions कौन है ये सब. ये तो मैं हूँ. And this is basically art based on the story of me as gangster Xeno. So this is me as a gangster with a katana, and the story basically is that मैं तो पढ़ूंगी, Mr. Ron ने लिखी है पूरी story, but I'll just give you a bit of a background so that you know what it's about. So I'm Xeno, and मेरा अभी nickname नहीं decide हुआ है उस story का, but I'll be known by it. Nobody knows my name. So basically, my father, he goes to a city. I'm gonna बहुत ही छोटा कर लूँगी मैं इस पूरी story. Okay, so I'm born in a city, and ये basically and I'm born in a place, and वहाँ पर मम्मी पापा होते हैं मेरे, and my dad basically goes to the city called the Night City for some work, and he never returns. So when I grow up, I decide कि भाई मेरे को तो gangster का leader बनना है, and I basically go to that Night City and to search for my dad. There I basically I join a gangster ka Knight, as in KNIT, Knight in shining armor, that one. Yeah, it's a cyber, actually it is a cyberpunk basically. It's a cyber city. I also wanted to tell that. It's cyber city. It's like a futuristic city जहाँ पर basically I go and I decide कि भाई मैं यहाँ पर आके I'm gonna join a gang, and slowly I'm gonna become the most prominent. So till the time पिछले हफ्ते पढ़ी थी मैंने story, and till that point of time I became the most wanted gangster, and so basically now the rival gang is not happy about the fact that I become a famous gangster. So this particular man is the rival head जो basically मैंने cook up की थी. I cooked up the story when in the last thing, in the last live. So this is Black Dragonfly, and this one's a villain, and uska supporter है मेरा cousin, मेरा चाचा का बेटा. And this is my team, and as Blue Agent has written that he has left them ambiguous, so we don't know who could it be. So I'm still thinking कि भाई मेरे fam से कौन होगा. Bro's dad went to get milk. No! Damn, bro. You did not throw in that joke. You did not. But मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है तो यार मिस्टर रॉन तब तक मैंने पढ़ी थी तब तक तो ठीक ही था ना, तब तक तो मैं बन चुकी थी ना. सो टिल जब तक मैंने पढ़ा था तब तक आई बिकेम फेमस गैंगस्टर, राइट? एम आई रॉन्ग? उतना तक तो हो गया था. उसके बाद तो मैं बिल्ड की थी स्टोरी. उसके बाद तो आप खुद की यू हैव द लिबर्टी टू डू इट. मिस्टर रॉन, जब पढ़ोगी जब पता चल जाएगा. यार मैं ये पूछ रही हूँ कि जब तक मैंने पढ़ा था तब तक की बात कर रही हूँ. आगे क्या होगा पता नहीं. जब पढ़ा था वो तो पढ़ चुकी हूँ ना. उसको तो स्टोरी लाइन चेंज तो नहीं होगी स्टार्टिंग से. तुमने स्टार्टिंग से चेंज कर दी. बफर हो रहा है. Is it? No, it's not. I'm watching on my other device. It's okay. हाँ फेमस गैंगस्टर बन गई थी और वाली बात आगे लिखी है. चलो ठीक है. Okay, fine. उसके बाद क्या होगा? Works fine, right? Yeah, it's fine. Okay, कुछ artworks हैं जो मुझे दिखाने हैं. So I'll so this is the whole artwork. Everyone saw it. Wait, should we move? Should I move here? Yes. Okay, so I saw it. Yes, I'm working. I'm working on solo adult Xeno Yakuza art with all those tattoos and whoa, nice. Oh, damn, bro. I'm waiting, cousin. I'm waiting. मतलब तुम story में विलेन हो सकते हो और ये life में नहीं हो. Thank you so much. This looks really nice. This looks pretty nice. Pikachu, hi. Don't use that word. Okay, I know what you mean to say, but don't use that word. पक्का तुम्हें अगर नाइट बॉट होता निकाल देता तुम्हें.
I will destroy your gangsters by what? Gang members because I'm Kira Light Ayagami. Okay, no comment. Okay, Baki arts ka dikhana hai. So this one is made by Sai's sister. She's in 7th grade. And she made this art and it looks adorable. So I'm going to show it. Yeah! Oh, damn, bro. This looks so good. A 7th grader has made this and it looks pretty cool. I love it. I absolutely love it. And I basically have a shorter hair and whoa. And it's just like she used like black pen to do it. Sai, your sister made it. Bring her to the live. I want to talk to her. Like I would like to know more about her. This is so amazing. This looks really nice. जापानीज यूट्यूबर वाली स्ट्रीम से देख के आया था बहुत फेमस चल रही है क्या चल रही है well I don't know what you're talking about. I mean I'm sorry unlike those Japanese VTubers मेरे 17,000 लोग नहीं दिख रहे मेरे को but I'm sorry I'm not aware of that high so I apologize for that. So yeah, this art is amazing and I feel like damn bro, just using up I think this is a gel as far as I know ये Stedler का use किया है क्या? I think Stedler का pen use किया है. It looks pretty good. So yeah, this was really nice. And I would really want to know. Oh, bye minions, bye. Thanks for joining in. Yeah, he only used a pen. I think it's a Stedler pen. This is pretty good. So Sai, next time, if you can, if your sister is comfortable, I would really want to actually talk to her on live. So that'd be really nice. Yeah. Spy Family का आलिया लग रही है. Fine, it's Alia. Okay, it's basically Anya, but ठीक है. Yeah, Anya ये. Anya has started wearing the clothes similar to mine. Thanks. Okay, next art. Thank you so much, Sai. Your sister is really great. Okay. This one is by Lee. I think I need to give a warning before we see it. So, warning. Okay, this one's a little bit of a 18 plus art. So I'm just going to quickly show it. And then I'm going to remove it. Okay. Yes, talk about short hair. Talking about short hair. This is... so let's see it. Yeah. Okay. This art. Okay. So this is me. I mean, honestly, ये कौन सा workplace है जिसने allow कर रखा है कि I can wear such a short skirt. But whoa, I mean, I think I pretty much like it. So I don't hate it, and I pretty much like that one. And yeah, so yeah, that's all. That I should quickly show it. Yeah, all right. So this is an art made by Lee. Thank you so much, Lee. This is amazing. So I am gonna be appreciating all the ones that I got. Thank you. Okay. Do we get more art? Because it was supposed to be like a fan art and fan fiction. So I have got 3 of them yet. और ये 2 extra मुझे मिले. So अभी तक I have received 5 of them. I hope I didn't miss anyone yet. I think that this is the only ones that I've received till now. So I'm just gonna say that. Yeah. Yeah, thank you. Okay, so next up we come to the part of fanfiction. I'm excited for that. So this is the one we're gonna be reading today, and this is the this is by Manu, by the way, and let me just reduce it so that सिर्फ text दिख सके and add ना दिखे भाई साहब. Yes. This is episode 6 of my fanfic. Let me just tiny and move it here so that we can all see the wait. Yes, okay. This is episode 6.
So, let's begin. Let's begin. Let's begin. Okay. Now, okay, let's just read one paragraph of the last chapter so that we know where we are. And the last chapter was basically this part. Yes, so where should I start? So इतना करते हैं. Okay. So the last part is where like Lost Kid and Xeno is like in a spot. इतना करते हैं. Yeah. The women's laugh was bitter and final. Thousands die every day under your council's rule, but where monsters are we? So basically, Lost Kid and Xeno basically changed their path and they reach a place जो उनको suspicious लगता है. वहाँ पर they see like in there they see something suspicious and they are interacting with those people. And what happens then? This is who raises a hand again? Again, shut them maybe less. There's a woman we're talking about. Minana. Yes. I think it was Minana and Simon who are basically first fighting with everyone. And now it's just Lost Kid and Xeno who are now interacting. The woman's laugh was bitter and final. Thousands die every day under your council's rule. But where the monsters are we? She raised a hand. The earth beneath them began to thrum. Cracks spiderwebbed through the stone, and a black light spilled upward from beneath. The darkness we summon will bring your illusion of peace to the ground. Her gaze locked onto Xeno. You feel it, don't you, girl? The truth beneath the lies. The thing the council feared so much, they buried it beneath this very city. A terrifying pulse of power surged through the earth, shaking the ruins. The ritual was nearing completion. Lost Kid and Xeno exchanged looks. This wasn't just a battle between Mayas anymore. This was the beginning of something far worse. So this was the battle in the last chapter. Let's go to the beginning of the 6th one. I hope everyone can see. The moment fell silent after the abyss sorcerer's last word, and then, crack! A bolt of lightning surged from the woman's palm, slamming it to the ground inches from Lost Kid. At the same time, a roaring wave of pressurized water spiraled from the man's hand, arching straight towards Xeno. Scatter! Lost Kid shouted, drawing his dagger in a flash as he dashed sideways, narrowly avoiding the water blast. I'm forgetting my accent. Okay. The woman, her name whispered through the nether realm as Kyra, crackled with electric magic, her body glowing with veins of light. The man beside her, known as Razel. Is that how you pronounce it? I think so. Okay. The man beside her, known as Razel, moved with calm brutality, his water magic generating towering coils of twisting water that smashed into stone, shattering it like glass. Let's see how far these little scouts can run. Kyra smirked, dashing toward Lost Kid with speed enhanced by electrical currents. Lost Kid held his ground, barely managing to block her lightning strikes with bursts of trap magic. His tattoos lit up, activating a trap circle that detonated beneath her feet, but she leapt, flipping midair, unharmed. Razel stepped forward, summoning a water spear and throwing it with perfect precision. Xeno gasped, frozen for a split second, and then weapon would have hit her squarely, but Lost Kid jumped in front, taking the hit across his side. He fell to one knee, blood staining his side. Xeno, stay back. Xeno's heart pounded. Something stirred within her. The sensation was cold, ancient. The magic in the air bent around her. Her breathing slowed as if time itself had dulled. The sky above dimmed slightly. Razel blinked. What is this feeling? Kara narrowed her eyes. No,
This isn't just aura, this is something dangerous. A black mist rose gently from Xeno's skin, faint at first but growing thicker. Her hair fluttered despite the still air. Her eyes turned a shade darker. Her breath deepened as if her body was becoming something more. Loskid looked up from the ground, stunned. This pressure, it's coming from her. From Xeno. A small piece of debris floating nearby suddenly disintegrated into dust from a raw magical pressure. Razor took a step back. That's no way. She's awakening. Kara clicked her tongue, clearly unsettled. We're not ready for that. Razor, contact the others. We should leave. He pulled a glowing obsidian shard from his cloak and whispered into it. Echo, 1, 2, Echo, 3 and 4. We're leaving from here now. Kara threw a glance back at Xeno, whose shadow now pulsed unnaturally on the ground. We'll finish this later, she growled, before she fully awakens. Razor slammed his palm into the ground and flood portal opened beneath them both. The water spiraled and swallowed them like a whirlpool. And just like that, they vanished. The silence returned, leaving behind scorched rubble, cold steam, and a very faint trembling in the earth. Loskid groaned as he stood slowly gripping his injured side. Xeno. Xeno blinked, her pupils slowly returning to normal. The mist faded. She looked down at her trembling hands. What was that? Okay, scene has shifted. Lightning streaks across the cracked pavement as Manuel and Leona exchange devastating blows with Minana, whose venom illusion magic warps the air around them into a psychedelic waves of toxic mirages. The battlefield is a swirling dance of serpentine vines, poisonous butterflies, and mind-twisting visions. Leona's time bind slowed down the distortions just enough for her and Manuel to maneuver without falling into the illusion traps. She presses 2 glowing runes against her own to stay grounded. Manuel, now! Manuel, still in his dreaded devil form, charges forward, cloaked in black energy. His right arm transforms into a demon-clawed gauntlet, and with a feral roar, he smashes into Minana's illusion barrier, cracking it. Don't underestimate me, little devil. Minana growls, her eyes glowing violet. You think this is over. Just as she starts to channel a hallucinogenic bloom, a faint electric signal pulses in her ear. She halts. Retreat order. With a final glance at the 2 fighters, she smirks. Next time, I'll bury you in your own nightmares. Then, like the melting shadow, Minana vanishes, dissolving into the wind. Manuel pants, his demonic form flickering. Coward. Leona adjusts her coat, eyes narrowing. They're converging. Something's not right. Scene changes. Meanwhile, the sound of rock-shattering punches and icy blasts echoes as Redix and Ariel fight side by side against Simon. Now in his grotesque abyss form, Simon's arms have mutated into clawed extensions of smoke and bone, his nether flame magic blazing like black suns behind him. You've got rusty, Ariel. Simon sneers, fire spiraling around his corrupt frame. I'm just getting started. Ariel shouts, slamming both fists into ground. Spikes of compressed bedrock shoot upward, catching Simon off balance. Redix channels a wide arc of blizzard blade, cutting through the smoke. We're ending this here. Their combo knocks Simon backward into a wall, nearly breaking his twisted arm. But then, abyss signals received. Echo 1, 2 all, fall back. Simon snarls, still grinning. I guess it's time to go for now. With a low growl, he turns into a pillar of nether flame, vanishing mid-flicker. Redix, his breath visible in the cold fog. They're running.
soon the scene shifts. All 6 of them, Redix, Mano, Leona, Ariel, Loskit, and Xeno, assemble in the burnt-out square where pieces of the city still crumble. Twilight bathes the land in orange hues. The wind is still. Loskit looks up, eyes narrowed. We saw 2 abyss sorcerers attempting a ritual beneath the city ruins. It wasn't just an ambush. They were summoning something. A dark entity. Xeno and I both sensed it. Xeno adds, "It's just one monster. It's connected to something deeper, something buried beneath the city, something ancient." They said they knew exactly what they were doing. Loskit continues. And that we never understand. That we're the real threat to the balance. Leona clicks her tongue. Typical villain talk. Manal crosses arms. Or maybe they know something about this world's past we don't. Ariel's eyes narrow. And they ran. Redix looks at the group. His breath slow. Maybe, just for now, we should go back, but they might plan something big in future, so we must be ready for that. They all nod. Episode 6 end. Man. So this story finished quick. Chapter 6 was cute. It was a little chapter, a cute little chapter. Okay. Wow. Nice. Okay. So what we know about is that the fight is over. So they came to this place and they were fighting the villains, but unfortunately villains they sent something from Xeno and they escaped. They thought maybe they're not ready for that. So there is a doubt whether typical cheese hoti hai ki we don't know if sometimes you look at the villains but then we don't know if they are doing it for the purpose. Who's at fault? Is the world government at fault or these villains who are trying to get justice? We don't know. Are these the villains who need justice? We don't know what's gonna happen. So it's very intriguing. I'm excited to know what happens next. Yeah, it was pretty nice. It was pretty cool to see what goes on. And 15 topo ki salami, yes. So yes, it's an interesting story. As you all know, it's called The Nameless Shadow. So this is so first of all, of course, let's go back and see ki tumhe slightly the one thing that has developed. Last time we got to know about everyone's power, right? Yahan par we see a slight interesting development. We see a bit of power from Xeno. Jo abhi tak chapters mein nahi the. She was someone who was just ho kya raha hai kuch samajh nahi aa raha, but now she has a little bit of power. So I'm trying to analyze the story now. We saw कि हर किसी के पास कौन से हैं powers, like Redix, Lost Kid, Ariel, Leona, Manal. We know what the power they had. Ariel had the veins, then there's ice. We know what's involved. But Xeno is somebody who has not awakened the power, but she is now. And we see it from here. We see that. So basically there's a black mist that we see. So there's some dark power that we gonna see Xeno have. That's gonna be cool to know what happens. I mean, what is this, my villain arc or what it's good? Was it gonna be? I'm interested to know what it develops into. What kind of power this is? Is it dark? What's it gonna be about? So I'm excited to know that. So thank you so much, and let's give credit for everyone who worked on this story. Let's read about that quickly, shall we? Okay, so Oh, there's a message. I didn't notice there was a message too. Oh, there's a message. Wait. I need to shift the okay, here. So the message says, let me read it out. So Manal, he has written it. Redix and Lost Kid are the editors for the story. The artists have been Nav, Akshay, Tia, Mainless, Ariel. So we've not seen any art in this chapter, but jo cover wo hai art. That is by, as you can see here, if you can see, then the cover art is by Tia, and that's the cover art is by Tia, and the rest of the arts that we saw, they're all by all the other artists.
And yeah, so all the artists that involved in the story are here, as if you can see them. Wait, I need to scroll a little more. And there's a message. Let me just read it through. Fanfic is of Xeno Matter. Okay, the fanfic is of Xeno Matter, a WCB India VTuber, as you can see. Episodes are being not too long and no artworks in current episode, as writer team and artist team are occupied with other work, but we are all be putting same energy again soon. So yes, hoping for all you guys to take your time, and yes, I'll be looking at what, I mean, honestly, it just keeps me, it keeps us wondering for more, and what, so I'm going to be excited to know what comes next. So thank you so much. I'll be waiting for what comes next. And it's a Friday, so we wait for another 6 days to come and see the next chapter. And it's all right if you guys are a little slow. And as far as you guys actually develop ki अच्छे से art, just take your time, because जितना आप time लेते हो उतना I think perfection आता है. Last week we couldn't do it, fanfiction, but here we are with a really nice one, and I'm pretty happy with it. Mayank, hey, thank you so for joining. One and only Mayank. Wow, okay. Hi. Dark mahal hai. Arey bhai, koi dark mahal nahi hai. Ron, I'm excited to see what you've written. So we're gonna be moving on to yours. RPGs, you're here, but do we have an update on your story? I don't know, because I didn't receive anything. So you were, I don't know if you've do tell me if you have any more developments, because I didn't see it in the story time mein. Yeah, I'm waiting for that. Yes, fanfic wala. I'm not sure if that's let me just switch to the, this is the chapter. Yes, let me just adjust the screen for once, and then we can start reading it. इसकी बस तो दिया है, इसे मज़ा आता है बहुत. Okay, so first of all I need to Oh, oh, cool, interesting. Because I see, so when if my apart from like all the fanfics जो मैंने देखे हैं, I've found them कि I have like a variety of fanfics, and I'm so incredibly amazed by how they have. So the first one, of course, is like almost a science fiction. If I'm not wrong, I can call it science fiction, The Nameless Shadow. Then we come to Ron, which has a variety. He's literally concluded two stories actually. I was a detective, one story. So it's like an elongated story. Detective wali story ho chuki hai. Now I'm a gangster. I can't believe that there's so many of them. Ron has written basically two of them. Then he has Krasny. I don't know. Ron, you need to help me out in understanding what that is. But yeet every time video banao. मतलब उसका क्या? I don't get it. Chapter 5 say yes, I'll go from chapter 5. I'm just saying that it's just, and the one that RPG is writing is like Indian mythologically inspired fan fiction, which is even more amazing. What the heck are you doing? Question आया है Mayank से. Let me answer that. So Mayank, one and only. So today is Friday, and on Fridays I usually have मेरा होता है fan fiction Friday, and I hope आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ आती हो. So basically I do fan fiction, तो मतलब fan art भी होता है. Today this time I did sure I know one Mayank जो मेरे क्लास में था, but ठीक है, I'm sure you're the only one. तो एक था, तो ये वाला लास्ट जितने फैन फिक्शन मैंने किए हैं वो सारे के सारे
सिर्फ फ़ैन फिक्शन में थे, आज जो है फ़ैन आर्ट भी था. बट फ़ैन फिक्शन क्या है? सो एवरी आई एम ज़ीनो, आई एम एन इंडियन वी ट्यूबर. सो बेसिकली क्या होता है कि एवरी फ्राइडे, सिंस ये आइडिया बेसिकली आया था फ्रॉम रॉन. ही लाइक्स टू राइट स्टोरीज एंड ही प्रपोज राइटिंग अ स्टोरी, एंड उसके बाद देन मनल ऑल्सो कैप्टन एंड RPG हैज़ ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग. सो दे राइट स्टोरी जिसमें फ़ैन फिक्शन है बेसिकली. इट कुड बी एनी जॉनरा. अभी तक मुझे साइंस फिक्शन और डिटेक्टिव मिला है एंड गैंगस्टर, एंड ऑल्सो इंडियन माइथोलॉजिकल बेस्ड एक स्टोरी चल रही है. सो ये सारी स्टोरीज होती हैं जो मेरे पे बेस्ड है, मेरा कैरेक्टर है उसके अंदर. बट ये है कि इट्स लाइक इट्स अ फिक्शन. If it's a fictional story, and if you join my Discord, you can see there's a channel called Story Time, and everyone tries to get their story into it, and they write their stories. And Manal, yes, I saw your message. I loved it. Chapter 6 was जितना अच्छा था वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया. But I did like it. I did like it. I finally, जैसे मैंने अभी actually I zoomed in and I showed that now I can see my final I can finally see my powers erupting. Not erupting, but we see a glimpse of my power. So I'm excited to know. तो स्टोरी सुनाते हो क्या? Mayank, today it's, जैसे मैंने पहले बोला, it's Friday fan fiction. Friday fan fiction. So I am a VTuber. I do variety of lives. आज का fan fiction हो गया. Yesterday I did Stumble Guys with chat. उससे पहले Wednesday को मैंने Wednesday को क्या किया था याद नहीं मुझे. Quiz किया था शायद. I don't remember. Tuesday को I think I did Getting Over It. Monday को मैंने DDLC खेला. So I like to game. I play games. I'll do gaming streams. This Friday I've kept it for all sorts of fan fiction जो मेरा आता है. Saturdays को मेरा demo drive होगा जो कल के लिए भी है. Guys, I just want to of course brief you of that. I will have, oh my god, what is fan fiction? भाई मैं मर जाऊंगी समझाते हुए. Fan fiction. So Mayank, फिक्शन आपको पता है फ्रिक्शन नहीं होता भाई. फ्रिक्शन नहीं कर रहे हम लोग. फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर. हम फिक्शन पे बात कर रहे हैं. फिक्शन. So by definition, fiction is an imaginary world and it's a story based on imagination. Non-fiction होता है for example based on events. For example एक non-fiction हो गया जैसे events यूक्रेन वॉर पे किसी ने स्टोरी लिखी. That's non-fiction जो अभी हो रहा है. It's a book. Fiction is like science, science fantasy world. So fan fiction is basically मेरे जो Xeno fam है, they're if I'm not wrong, hopefully I'm right, they are my fans and they write fiction on me. हिंदी में समझाती हूँ. तो मेरे फैंस ये सब, एंड ये लोग मेरे लिए कहानी लिखते हैं जिसमें मैं कैरेक्टर हूँ और ये मेरे फैंस हैं. तो ये फिक्शन को लेके एक इमेजिन क्या कहते हैं. रुको मेरे को हिंदी सर्च करने बोलो. मेरे को हिंदी सर्च करना पड़ेगा कि इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में. इमेजिनेशन इन हिंदी. हाँ, कल्पना. हाँ, काल्पनिक स्टोरी बेसिकली बन रही है मेरे ऊपर. ठीक है यार. तो मेरे ऊपर काल्पनिक कथाएं. Oh my god, I've gone so deep into this. So काल्पनिक कहानी बन रही है और बनाई है मेरी Xeno फैम ने. जो जितने लोग आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहे होंगे जो चैट में है, मनल है, रेडिक्स है, इनमें से मनल ने स्टोरी लिखी है, एडिटिंग रेडिक्स अलॉस्किन ने किया है, आर्ट ली आपने देखा होगा ब्रूस लीज इनसाइड उन्होंने किया है. एंड तो वो लोग बेसिकली स्टोरी बनाते हैं मेरे ऊपर. सो दैट्स एग्जैक्टली. तो आपने अभी जो पढ़ा, जो मैंने पढ़ा बेसिकली, जो आपने अभी सुना, जो मैं कह रही हूँ वो एक स्टोरी है. वो एक साइंस फिक्शन है जो मनल लिख रहे हैं, जो वाटपैड पे आपको मिल जाएगा. अगर आपको स्टोरी पढ़नी है वो दोबारा शुरू से, ताकि आपको वो स्टोरी लाइन समझ आए. वो कहानी का जो स्टोरी लाइन को क्या बोलते हैं, जो पूरी कहानी है आपको अगर वो समझनी होगी तो आप वो वेबसाइट लिंक खोल सकते हैं एंड उसमें आप पढ़ सकते हैं. आई थिंक शुड आई पुट द लिंक हियर और somebody put the link here. So you put the link there and I will
या स्टोरी प्लॉट बेसिकली पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट आपको स्टोरी समझ आएगी अगर आप वाटपैड में पढ़ लेंगे शुरू से, तो आपको थोड़ी समझ आएगी. तो जेनो मैं हूँ कैरेक्टर, एक वीट्यूबर हूँ, IRL, आई एम अ वीट्यूबर, बट ये सारी फिक्शनल स्टोरी बनी है. आई थिंक दैट्स आई डिड अ गुड जॉब in explaining. Luffy, I've said it a lot of times, I'm an alien VTuber and I'm 201 years old. Yeah, so I hope मुझे मयंक, I hope मैंने बहुत अच्छी सुनाई. Thank God मैं मैथ्स टीचर की तरह नहीं हूँ जो बोले कि हाँ हाँ मेरे से 100 बार पूछो मैं समझा दूंगी, वो समझाती कुछ नहीं है, बट होपफुली मैंने अच्छे से समझा दिया हो. So now I forgot to post your Yandere one. कहाँ है? मेरे को जानना है यार. मिस्टर रॉन की स्टोरी आने वाली है इसलिए वो डर रहा है थोड़ा. मत डरो यार, मतलब चिल, तुम्हारी स्टोरी इतनी चिल होती है कि मतलब पढ़ के बहुत मज़ा आता है. आई वुड से कि इफ़ आई एम एंटिसिपेटेड, इफ़ आई एम एक्साइटेड, सो इफ़ आई एम एक्साइटेड टू रीड लाइक स्टोरीज बाय मनल, I am happy reading your story because it's so fun reading it. So your stories are fun, if I would say it so, because it's a mix of थोड़ी English use होती है इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में. So Mr. Ron, you don't have to be worried. I don't know why. And you are a story, और तुम वैसे राइटर हो जिसने literally किसी एडिटर का हेल्प नहीं लिया है. So I think, I mean I don't know if you have, but you've not taken any help of editor. You are just that's good on you. So I like जितना टैलेंट लोगों में से, हाँ आपको समझ आया? Good मयंक, good. मोटा मोटी बात है, जो फैंस होते हैं वो अपनी फेवरेट मेन कैरेक्टर पर स्टोरी लिखते हैं या उनकी भावनाओं को प्रकट करने का एक ज़रिया होता है. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. मैं That was very well explained. Very well. Yes. Deccan Titan and Naruto. ये अचानक से अलग से कमेंट किया था, ये समझ नहीं आया मुझे, बट थैंक्स सो मच. Okay then, let's begin the story of Mr. Ron. I'm excited for that. And Mr. Ron, you should be happy. Don't be afraid. I absolutely enjoy reading yours. So we are on chapter. अरे 5 कैसे आ गया? 6 पे जाना. 5. एंड थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ा एंड पढ़ लेते हैं कि पहले कहानी में क्या हुआ था. ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा बैकग्राउंड हमेशा पढ़ना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आए कि आखिर हो क्या रहा है. वेट, लेट मी जस्ट साइड ट्रैक दैट्स, जस्ट पुट इन द साइड सो दैट everyone can see it. And should I keep it right here so that everyone can, I hope सबको दिख रहा होगा. स्टोरी थोड़ी इंग्लिश में है, आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में मतलब सुनने में. या ये महिला ने, इन महिला ने हमको समझा दिया है. ये महिला ने, इन महिला ने बहुत अच्छे से आ गया. इट्स ओके माया, इट्स ओके, चिल यार. मतलब हमारा कमेंट सेक्शन चिल रहता है. ठीक है, हमारा चैट, दिस इज आवर चैट, दिस इज हाउ आई कॉन्वर्स. ठीक है, आई मीन आई होप यू आर नॉट ऑफेंडेड. दिस इज हाउ वी चिल. सो ओके देन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लास्ट जो हमने सीन पढ़ा था उसमें एक न्यूज़ आती है चैनल पे. सो बेसिकली जेनो चैनल एक न्यूज़ चैनल देख रही है जहाँ पर उनको वो क्या कहते हैं, कैन यू रीड माई पोएम एज वेल? बिल्कुल हम पढ़ेंगे. नॉट रियली? ओह आई एम सो सॉरी. वर यू ऑफेंडेड? ओह शूट. ओह गॉड, आई एम सॉरी. आई अपोलोजाइज इफ यू आर ऑफेंडेड. ओके, I hope you don't feel bad. Okay, so basically मैं लास्ट सीन में एक देख रही होती हूँ, एक न्यूज़ चैनल देख रही होती हूँ एंड उसमें एक न्यूज़ आ रहा होता है एंड दिस इज़ व्हाट शी सेज. ठीक है, ओके लेट्स गो. आई एम गोइंग इनटू माय रीडिंग मोड. ओके, सो apologize if I don't pay attention to the chat. न्यूज़. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा. आज की ताज़ा खबर, नाइट सिटी में हुए थे इलेक्शन और इस बार इलेक्शन जीता है मिस्टर डोनाल्ड डक ने. रेफरेंस देखो, रेफरेंस. जीतने के साथ ही उन्होंने एक स्पीच दिया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि सारे गैंगस्टर हो जाओ सावधान, अब तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है. और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो नाइट सिटी को और ज़्यादा बेस्ट बनाएंगे. आई एम गेसिंग सम डेवलपमेंट्स. नाउ जेनो बोलती है, अच्छा तो ये डोनाल्ड डक जीत गया है और गैंगस्टर्स को धमकी देखते हैं ये क्या ही कर पाएगा. ओके, चैप्टर 5. रात का समय है.
जेनो न्यूज़ ऑफिस के पास अपने कार के साथ थी। कुछ देर बाद न्यूज़ ऑफिस के अंदर से नेहा बाहर आती है और चलते हुए अपनी घर जाती है। जेनो नेहा के सामने गाड़ी रोकती है और कहती है, वाओ, अंदर आ जाओ। This is so not proper. I would never say this. Let me make it dramatic. I should be like, चुपचाप अंदर आ जाओ। नेहा बोलती है, तुम कौन हो? देखो मैं अनजान लोगों की कार में नहीं बैठती। अरे लड़की हूँ यार, आ जा, कोई नहीं, आई वोंट डू एनीथिंग। तुम जिस इंसान से मिलना चाहती हो मैं उसको जानती हूँ। नेहा बोलती है, कौन इंसान? जेनो। अरे वही जिसको तुमने खासदोरा नाम दिया है। नेहा स्माइल करके अंदर जाकर बैठ जाती है। जेनो गाड़ी चलाने लगती है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? और तुम कौन हो? क्या तुम उसकी कोई दोस्त हो? बताओ 333 बताओ क्यूब। ओके, चुप करो, एक टाइम पर सिर्फ एक क्वेश्चन, और हाँ पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। नेहा बोलती है, ओके, कितनी अच्छी बात है यार, सुन भी ले रही है। कासाजोरा, ये जो तुमने नाम दिया है ये नाम उसको पसंद नहीं है, तो नाम को चेंज करो। Oh my god, you totally took it personally. Oh god. Okay. नेहा, ओके, वैसे मैं गवर्नमेंट हाँ ओके वैसे मैं गवर्नमेंट को बताती नहीं हूँ कि मैं भी उसकी फ़ैन हूँ, तो उसके लिए ज़रूर करूँगी। जेनो, गुड, देखो उसको बोला है कि वो किसी दिन ज़रूर मिलेगी तुम्हें। सच्ची में? मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता। उसके बाद जेनो नेहा से कुछ बात करती है और उसको घर तक छोड़कर आ जाती है। अगले दिन जेनो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और फिर न्यूज़ सुनती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा। कल हमारे ऑफिस को एक लेटर आया था और वो लेटर था काजडोरा का। उसने लेटर में ये लिखा है कि नाइट सिटी की पुलिस सबसे कमज़ोर है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, ये सारी बातें उसने लेटर में लिखी थी। आप देखते हैं पुलिस इसका क्या जवाब देती है। जेनो को मैसेज आता है आशु का। आशु? अब आशु कौन है यार? अब मैं जानता है, अंशु तो नहीं है। अंशु फ्रॉम द चैट। बिकॉज मेरे फैन फिक्शन में मैंने ऑब्जर्व किया, जितने हमारे ऑब्जर्व किया है ही ट्रू कि जितने मेरे चैट फॉलोइंग, जितने जेनो फैम होते हैं उसके मेंबर्स मेरे स्टोरी में दिखते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स जो नेमलेस शैडो में थे वो सारे मेरे जेनो फैम है। सो आई वांट टू नो हु इज दिस आशु? नेमलेस है क्या? कोई भी रैंडम पर्सन है? अच्छा ठीक है, ओके। जेनो को मैसेज आता है आशु का। अरे हाँ, ये तो तुमने पहले बताया था। सो आशु इज़ द पर्सन जिसने ये सारा झोल करके नाइट सिटी में जेनो को अंदर किया, क्योंकि उसके पास लीगली उसके पास था नहीं पासपोर्ट या कुछ था नहीं उसके पास। तो वो आशु नाम का एक इंसान होता है जिसका वो हेल्प लेके यहाँ नाइट सिटी में आती है। ये स्टोरी का प्लॉट पहले था, मैं नहीं पढ़ पाई थी, सॉरी। ओके, जेनो को मैसेज आता है आशु का कि हमारे प्राइवेट क्लब में मिलो, आज पार्टी है। जेनो रेडी होकर चली जाती है। जेनो को जाते हुए पड़ोसी देख लेता है। क्लब के अंदर सारे फीनिक्स गैंग के मेंबर्स आ चुके हैं। अल्फा स्टेज के ऊपर जाता है और बोलता है, सबसे पहले सारे मेंबर्स का शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया और हमारे ग्रुप को सबसे बेस्ट बनाया। आज इस गैंग को पूरे 15 साल हो चुके हैं और इस खुशी में आज का ये पार्टी, उम्मीद है सब एंजॉय करोगे। तो पार्टी स्टार्ट होती है। जेनो काउंटर के पास जाके बैठ जाती है। जेनो देखती है आशु हाँ वेटर बना है। उसको वेटर बना दिया। Damn bro. जेनो, तुम तो वेटर बन गए। अरे शिट, sorry, I should not say that word. Dude, whatever I'm thinking, how is it that कि next line में वो actually में होता है? Damn, that's literally my reaction. Wow, it's crazy. Every time I read this story, I'm so amazed. तुम तो वेटर बन गए सिर्फ आज के दिन के लिए, कल से नहीं। लगता है पनिशमेंट मिला है। हाँ, पनिशमेंट ही है, बहुत बुरा पनिशमेंट। जेनो उसके ऊपर हंसती है। आशु बोलता है, हंसो मत। ओके ठीक है, वैसे तुम कोई और पनिशमेंट भी चूज़ कर सकते थे। आशु बोलता है, ये सबसे आसान था। ओह माय गॉड, व्हाट कुड बी द अदर वंस? ओके, मैं तुम्हारे जगह होती तो कोई दूसरा चूज़ करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वेटर्स बन के किसी को बियर वाइन या कुछ सर्व करना। ट्रू वे ट्रू।
तभी वहाँ अल्फ़ा आ जाता है. अल्फ़ा इज़ द बॉस आई गेस एंड ही इज़ द अल्टीमेट अपेरेंटली टिल नाउ अनलेस आई रिप्लेस हिम. ओके. हे गैम की सुंदर और खूंखार श्रेणी. ओहो ओहो ओहो. ओके. पार्टी में मज़ा आ रहा है. हाँ बहुत. हे आशु मेरे लिए एक वाइन और ज़ेनो तुम क्या पीना चाहोगी? एक सॉफ्ट ड्रिंक. हाँ यार आई डोंट ड्रिंक. I do not drink, so basically, of course, I will not be taking any kind of alcohol. I don't drink alcohol in real life too. I don't. मैंने जब गैंग स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गैंग सबसे बेस्ट बन जाएगा. अल्फा ज़ेनो को एक लिस्ट दिखाती है. ये देखो नाइट सिटी के सारे गैंग की तुम्हारी वजह से हमारी गैंग 2nd नंबर पे पहुंच गई है. अरे कोई ना, बस ऐसे ही तारीफ करते रहो. वैसे ये लिस्ट क्या पुलिस के पास नहीं जाती? अल्फा बोलता है नो, ये सिर्फ सारे गैंग्स के साथ शेयर होता है. ज़ेनो बोलती है अच्छा, अच्छी बात है. वैसे ये 1st नंबर पर कौन है? ऑफ कोर्स माय नेक्स्ट टारगेट. अल्फा बोलता है 1st नंबर पर है ब्लैक ड्रैगन फ्लाई और ये गैंग पिछले 30 साल से टॉप पर है. उनके गैंग का लीडर एक कोई बुढ़ा इंसान है, लेकिन वो बुढ़ा बहुत ख़तरनाक है. उम्मीद है किसी दिन फर्स्ट ज़रूर हो जाएंगे. अल्फा बोलता है तुम जब तक साथ हो ज़रूर होगा. खैर अभी पार्टी एंजॉय करो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गाना भी बजने वाला है. अरे वाह, आई एम गोना गेट अ न्यू. ओह माय गॉड, नो वे. अल्फा चला जाता है और नाच करना चालू हो जाता है. ज़ेनो के लिए क्या बजाता है? गैंगस्टर बेबी सॉन्ग. मैंने सुना नहीं है ये गाना. आई हैव नेवर हर्ड दिस सॉन्ग बिफोर. आई शुड लिसन टू इट. सुनना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा वाइब समझ आए कि एक्चुअली क्या वाइब चल रहा है. ओके. तो सब नाचने में बिजी हो जाते हैं. तभी हर तरफ से स्मोक आने लगता है. सबको लगता है कि ये पार्टी का हिस्सा है, लेकिन ये सब स्मोक ग्रेनेड थे. तभी बाहर से आवाज़ आती है कि पुलिस ने हमला कर दिया है. सब पुलिस वाले अंदर आ गए और गोली चलाने स्टार्ट कर देते हैं. ज़ेनो के अलावा किसी के पास गन नहीं था. ज़ेनो गोली चलाती है और लेकिन पुलिस वाले बहुत सारे थे. पुलिस एक एक करके सब फीनिक्स गैंग के मेंबर्स को मारने लगते हैं. ज़ेनो की गोलियां ख़त्म होने लगती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता. ज़ेनो एंड गैंग के कुछ और मेंबर्स वहाँ से भागने लगते हैं. वो लोग एक सीक्रेट रास्ते से होकर बाहर आते हैं. पुलिस से बचने के लिए सारी अपनी अपनी कार से भागने लगते हैं. पुलिस उनका पीछा करने लगती है, लेकिन सब पुलिस से बचते हुए सीक्रेट बेसिस के अंदर चले गए. कुछ आवर्स के बाद मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है. ज़ेनो ने सारे मेंबर्स को एक जगह बुलाया. बहुत सारे मेंबर्स मर गए थे और अब बस कुछ ही बचे थे. ज़ेनो बोलती हैं ये क्या हो रहा है? Plucky boy, as you read if you read the title of my life, it's called a fan fiction Friday. So ये fan fiction मिस्टर रॉन ने लिखा है और मैं अपना fan fiction पढ़ रही हूँ. Apparently in this fan fiction I am a gangster. And इतना समझ लो. उसके बाद when I end the story, I don't want to interrupt the story. Once I end the stream or maybe when I'm in the final ones, I will tell you what exactly this is. Okay? Yeah. ये सब हुआ कैसे? क्या कोई जासूस है हमारी गैंग में? री एक कैरेक्टर है. I know who that person is, but ज़ेनो आपको शायद अभी न्यूज़ देखना चाहिए. न्यूज़. ओके. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा. ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हमारी तरफ आ रही है. फीनिक्स गैंग के ऊपर हुआ पुलिस का हमला. बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे मेंबर्स मारे गए, इंक्लूडिंग उनका लीडर अल्फ़ा. ये बात पता चला है कि अल्फ़ा बाकियों को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया. ग्रुप में भी अभी काजुरा और कुछ मेंबर्स गायब हैं. पुलिस के बयान के मुताबिक किसी अननोन इंसान ने पुलिस को खबर दिया कि आज फीनिक्स गैंग के लोग पार्टी कर रहे हैं और लोकेशन भी शेयर किया, इसलिए पुलिस सबको मार पाई. पुलिस बाकी गैंग मेंबर्स एंड बाकी गैंग्स के ऊपर भी हमला करने की प्लान में है. मिस्टर डार्क ने जो बोला था उन्होंने वही कर दिखाया. ज़ेनो एंड बाकी के लोग शॉक में थे. सब लोग अब क्या करेंगे सोच में थे, लेकिन ज़ेनो उन सबको हौसला देती है. Chapter end 5. Let's go over the 6th chapter. Man, I love this story. Okay. ज़ेनो फैसला करती है कि न्यू गैंग बनाएंगी. ज़ेनो सबको बोलती है यार ये मैंने खुद तो नहीं कराया ये सारा पुलिस का झंझट ताकि अल्फ़ा मर जाए, ताकि मेरे को गैंग मिल जाए. I'm just speculating. Let's see what happens. Okay. ज़ेनो, मुझे पता है कि तुम लोग अल्फ़ा को नहीं भूल सकते, लेकिन मुझ पर यकीन रखो. मुझ पर भरोसा रखो. ज़ेनो सबको हौसला देती है और वो एक अच्छी लीडर बनकर दिखाएगी.
सब अग्री करते हैं। जेनो एक मीटिंग रखती है, सभी मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। जेनो न्यू गैंग के बारे में बोलती है और गैंग का नाम पर्पल रोज रखती है और कुछ रूल्स भी बनाए। रात का समय है। जेनो चुपकर नेहा से मिलती है और अपने काज़ाडोरा रूप में थी। वाह काज़ाडोरा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जेनो बोलती है शुक्रिया, वैसे मैंने बोला था मेरे नाम चेंज कर दो, तुमने किया नहीं। वो मुझे अच्छा नाम नहीं मिल रहा तो माफ़ करना। कोई बात नहीं, अच्छा काम किया। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल न्यूज़ में सबको ये बोल दो कि काज़ाडोरा अब से दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा मैं क्यों बताऊँ? मैं न्यू गैंग बना रही हूँ और मुझे पता करना है कि कौन है इन सब के पीछे, और वैसे भी मुझे ये काज़ाडोरा नाम पसंद नहीं है। एक न्यू गैंग, वाह मुझे भी ज्वाइन करना है। आप ऐसे लोगों को ग्रुप पे ज्वाइन मत कराओ प्लीज़, एटलीस्ट नो थैंक्स। एनीवेज, लेकिन तुम तो मेरे हो, गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला सकती हूँ। ओह ये भी इम्पोर्टेंट बात है। नाइस पॉइंट। तो तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर मेरे लिए काम करने के लिए रेडी हो? यस, मैं नेहा आज से आपकी खबरी। ना गुड गर्ल। ओह दिस इज नाइस, आई शुड से इन अनदर स्टाइल। गुड गर्ल। अब मैंने जॉब सब बोला वो सब करो। अच्छा, जो बोला वो सब करो। ओके दिन हो गई है। न्यूज़ हेडलाइंस, लेट्स सी व्हाट नेहा इज टेलिंग अस अबाउट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा। सूत्रों के हवाले से होता है क्या? सूत्रों के मुताबिक होता है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि काज़ाडोरा अब इस दुनिया में नहीं है। हमें पता चला है कि पुलिस के फिनिक्स गैंग पर हमले के टाइम पर काज़ाडोरा को बहुत इंजरी हुई थी और वो सर्वाइव नहीं कर पाई। और भी न्यूज़ पता चला है कि पुलिस 5 और गैंग्स को ख़त्म कर दिया है। जेनो अपने न्यू गैंग के साथ बहुत क्राइम करती है। हर कोई ये सोच रहा था कि न्यू गैंग इतना खतरनाक कैसे है सकता है। कुछ दिन बाद जेनो अपने गैंग के मेंबर्स को उनको रोल देती है। गैंग में 3 खतरनाक लोग थे और उनका नाम रेडिक्स और ब्रूस ली था। Oh God. Oh, Jesus. Okay. All right. ये have Reddick, Sai and Lee approved of it? ये फिर बोलेंगे कि यार ये तो बुली कर रही है, यहाँ पर भी मेरे को अपने अंडर कर लिया। Have these guys approved of this or not? I want to know. Oh God. चलो ठीक है। Anyways, अब तक तो अब स्टोरी में तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं। रेडिक्स एंड साई जेनो के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बनते हैं और ब्रूस ली जेनो का हिटमैन। नाउ जेनो तीनों को मौज पिलाती है। जेनो, अब कुछ न्यू लोगों को भर्ती करने का टाइम आ चुका है। जेनो अपने हैकर्स के ज़रिए सारे क्रिमिनल्स को मैसेज करती है कि अगर पर्पल रोज ज्वाइन करना है तो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। ओह इंटरव्यू डे, इंटरव्यूज़, ओके लेट्स गो। जेनो इंटरव्यू वाले रूम के अंदर थी और उसके साथ उसके 3, एक्चुअली इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, वो टेस्ट होना चाहिए। रिमेंबर, हैव यू गाइस वॉच्ड जोजोस बिज़ार एडवेंचर? You've not seen it, right? जियोनो पहले टेस्ट करते याद है तुम्हें? और उसमें होता है we gotta reread it, I guess. मतलब स्टोरी यार, एंट्री तो तुम्हारी अभी हुई है। दी होता नहीं है। जियोनो की बात कर रही हूँ। रिमेंबर व्हेन जियोनो इज गिवन दिस टास्क कि भाई इस लाइटर को बुझने मत देना। सो बेसिकली आई एम सपोज टू जज। आई थिंक कि इंटरव्यू की जगह ना टेस्ट होने चाहिए, बट ओके चलो इंटरव्यू लेते हैं इन सबका। जेनो इंटरव्यू वाले रूम में अंदर जाती है। उसके साथ उसके 3 मॉड्स भी थे। बाहर बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। जेनो बोलती है शुरू किया जाए। इंटरव्यू चलता रहता है। बहुत सारे लोग ने इंटरव्यू दिया। तभी जेनो नेक्स्ट एक इंसान अंदर आता है। हेलो, मेरा नाम मंगलू है। वाओ, ओके साई, रेडिक्स, ली, all of you guys are in. I am so sorry, but apparently even in this story you're basically my mods. So if you approve, तुम मेरे गैंग में 3 खतरनाक लोग हो जिनका नाम है रेडिक्स, साई, ब्रूस ली। और रेडिक्स, साई लेफ्ट हैंड है और apparently ली you're my hitman. So I hope you have approved of this. I hope you don't feel कि I am trying to bully you again. But yes, apparently यहाँ पर ये है स्टोरी।
ओके, इंटरव्यू चल पड़ा है। अपेरेंटली यहाँ मंगलू आ चुका है। वाह वाह, मुंह से सुपारी निकाल के बात करने का। सो डायरेक्ट विस्पर करते हैं, वो तोतला है। अच्छा तो बताओ मंगलू, तुम क्या कर सकते हो? मैं एक हाकर हूँ और धमकी भी बहुत अच्छा देता हूँ। ओके, सो बेसिकली आई कैन नॉट डू द तोतला वाला थिंग, बट ही इज़ अपेरेंटली अ हैकर एंड वो धमकी भी दे सकता है। अच्छा, नाइस नाइस। अच्छा, तुम एक हैकर हो और धमकी भी देते हो। अच्छा, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। Why is it that everything I'm trying to do वो पूरा प्रिडिक्शन हो जाता है? It's so cool that how the writer has like जो मेरे दिमाग में आ सकता है वो लिटरली नेक्स्ट लाइन में हो जाता है। Okay, nice nice. This writer is just thinking like me. Wow. Okay. ठीक है, इसको हैक करके दिखाओ। साई एक कंप्यूटर देता है और मंगरू हैक कर देता है और जेनो उसको टीम में शामिल कर लेती है। मंगरू, तुम यहीं रुको, मैं मेरे काम आओगे। नो, अगला इंसान आता है। जेनो उसको देखती है। पकड़ो उसे जल्दी, ये मेरा पड़ोसी है और इसने मेरे 20 लाख रुपए चुराए हैं। इसके दोस्तों को भी पकड़ के लाओ। तो ब्रूसी पड़ोसियों के पकड़ लेता है और मंगरू उसको धमका देता है। Yeah, you translate you. Yes. How do I mean? You guys, do you want me to actually say this in my totally आवाज? You guys are gonna make fun of me so bad. ताले देने को बहता था तुमने? क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? I cannot say the word, but I can't stop laughing. टोपली खोलते ना डालूंगा। अब इसका ट्रांसलेट करो कोई यार प्लीज़। खोपड़ी खोल के बाल डालूंगा, मतलब इसका ट्रांसलेशन, इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन देने का ना था ना। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। हाँ मुझे पता है कौन सा फर्स्ट वर्ड है। खोपड़ी खोल के बाहर डालूंगा। अच्छा, खोपड़ी खोल के बाहर। अच्छा ठीक है, गॉट इट। अच्छा, चाइनीज़, हम लोग चाइनीज़ खाते हैं रे बाबा, समझता नहीं है। ठुक कालो, अब ये बताओ किधर है दिनों का 20 लाख रुपया? अब ये हेरा फेरी का सीन लग रहा है। Oh my god, I can't stop laughing, dude. रुको यार, रुको। Oh, I'm gonna cry laughing. Okay. Anyways. Wait. Okay. Let's continue. ठीक है, वो तुम खा गए ले। वो तो तुम खा गए ले। बंद करो ये नौटंकी और मुझे मेरे। अच्छा थैंक गॉड, मुझे लगा मंगरू दोबारा बोल रहा है। ये ज़ेनो है। ओह गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मंगरू बी द MVP ऑफ द स्टोरी। बंद करो ये नौटंकी और मुझे मेरा पैसा जल्दी से ला कर दो। पड़ोसी बोलता है ठीक है। मंगरू, इससे ले जाओ और नज़र रखना। मंगरू उसको ले जाता है। इस तरह इंटरव्यू चलता रहता है। कुछ देर बाद एक और इंसान आता है। जना पोजिया, अरे अभिजीत भाई, तुम CID छोड़कर यहाँ कर आ गए हो? अभिजीत कौन है CID में? अच्छा, actually I have not seen the series. I have not seen the series. I've only seen the memes, so I don't know exactly who this person is. But कौन सा वाला है ये? Actually ठीक है, तुम अच्छा नहीं, दाया तो तोड़ देता है दरवाज़ा एंड प्रदूषण इज़ द मूछ वाला गाय। सो अभिजीत शुड बी द वन दैट सेज, जिसका वो मीम है ना। आप में समझ गई कौन है, मीम बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छे काम करके थक गए, अब मुझे भी गैंगस्टर बनना है। जना बोलती है ठीक है। जना बोलती है तुम मुझे कहाँ गया, हाँ तुम मुझे आज CID ऑफिसर ही अच्छे लगते हो ना। दोनों के बीच बहुत देर बातें होती रहती हैं और जेनो को अब गुस्सा आने लगता है।
अरे no, no. I I can't read that. You guys want to read it? You guys can read it. Go. You guys are gonna make me cry laughing यार. क्या? यार अब मतलब बनता है कि वो जो एडिट है ना अभिजीत का, प्लीज़ उसमें से मेरी फ़ोटो लगा दो. उसमें से उसकी फ़ोटो हटाओ, मेरी लगाओ. अब ये मेरा हो गया है. Oh God. ओके अभिजीत भाई चला जाता है. ऐसी क्या बात हो रही थी कि मेरे को गुस्सा आ गया. आई एम सो एक्साइटेड टू नो, लाइक आई रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड, बट ओके. अभिजीत भाई चला जाता है. इंटरव्यू ख़त्म हुआ और जेनो की गैंग में बहुत सारे लोग शामिल कर लिए थे. गैंग में टोटल 219 लोग शामिल हो चुके हैं. बाद में सुमित भी गैंग ज्वाइन कर लेता है. अच्छा, सुमित इज़ ऑल्सो देयर. ही इज़ नॉट इन द चैट राइट नाउ, बट वेल आई थिंक अगर सुमित आ जाता है मतलब उसकी पूरी फैमिली भी साथ मान जाएगी. मतलब इट विल हैव टेंजन, इट विल हैव रिबेका, इट विल हैव पेमा, इट विल हैव एवरीथिंग. वो सबको लेके आ जाएगा. चलो ठीक है. ऐसे वैसे 219 क्यों? 219 क्यों? आई वॉन्ट टू नो मिस्टर रॉन. एक बेस पे रैप्टा वालों की सड़क पर बीप करोगे. Oh God. Okay. Yes, Atin, it's a fan fiction, but where Wattpad is done, now it's my pure fan fiction. This is where I'm a gangster. Okay. बाद में सुमित भी. अच्छा हाँ, 219 क्यों? जब तक रॉन आंसर करता है तब तक आगे चलते हैं. ओके बाद में सुमित भी गैंग ज्वाइन कर लेता है. जेनो की गैंग अब पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई थी और क्राइम करने में एक्सपर्ट हो गई थी. अच्छा नाइस. कुछ दिन बाद न्यूज़. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा. आज की ताज़ा खबर, नाइट सिटी में आया है एक न्यू गैंग जिसका नाम है पर्पल रोज़. ऐसा लग रहा है कि ये गैंग बहुत ख़तरनाक है. पुलिस और मिस्टर डार्क के लिए इनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया है. इस गैंग की लीडर का नाम है लेई, जिनका चाइनीज़ में मतलब है थंडर. अब देखना ये होगा पुलिस और गवर्नमेंट आगे क्या करती है. नाइस. ओके, आई लाइक दिस नेम. मैं अपडेट करना भूल गया. अपडेट क्या करने भूल गए? मेरे को तो ठीक ही लग रहा है. 2019. I wanted to know why 219 क्यों. I just wanted to know why, but it's okay. I like the name by the way, Lei. I like the name. जेनो अपने रूम में बैठकर न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ के बाद ले चलेगा ये नाम. अब पता करना होगा कि उस दिन क्लब में हमारे बारे में पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया था. कौन है खबरी? हु इज़ दिस बीट्रेयर? चैप्टर 6 एंड हो चुका है. चैप्टर 7. जेनो और उसके गैंग की वजह से पर्पल रोज़ गैंग अभी बहुत ख़तरनाक बन गई थी. हर तरफ सिर्फ उस गैंग की बातें हो रही थी. लेकिन मिस्टर डक अभी कम नहीं थे. वो एक एक करके सारे गैंग को साफ कर रहे थे. जेनो अपने रूम के अंदर थी और उसके मॉड्स भी साथ में थे. ओके गाइस, यू गाइस आर इन माय राइट हैंड, माय लेफ्ट हैंड एंड माय हिटमैन. ओके जेनो, ये डक तो सारे गैंग्स को एक एक करके साफ कर रहा है. उसका कुछ करना होगा. अब कितने गैंग्स बचे हैं ज़रा लिस्ट दिखाना. रेडिक जेनो को लिस्ट दिखाता है. पर्पल रोज़ गैंग अब सेकंड नंबर आ गई थी. गैंग का लिस्ट है. फर्स्ट है ब्लैक ड्रैगन फ्लाई, सेकेंड पर्पल रोज़, थर्ड क्रिम्सन बटरफ्लाई, फोर्थ सेलेस्टियल क्वींस. हाय ये 5वां नंबर किसने क्यों सोचा तुमने हैं? क्या करता है ये कमला पसंद वाला गैंग? ये कमला पसंद ना छोटा मोटा करता है, जैसे पिक पॉकेट वाला. आई थिंक इसमें से उसके बाद इसके सारे घूमते होंगे. क्या कहते हैं ये ओ आई नो व्हाट कमला पसंद वुड डू. भाई मेरे दिमाग में स्टोरी ऐसे बनती है कि सो व्हाट कमला पसंद गैंग डज, ये मेरी स्टोरी है, ये मेरा आइडिया है, इज़ दैट वो क्या करते हैं, कमला को बोलते हैं कि तुम भूत बनो और किसी कमले यू गो टू सम फैमिली एंड मैरी दैट पर्सन एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ गोस्ट देयर. व्हाट विल हैपन, वहाँ से लोग भाग जाएंगे और फिर तुम पूरा घर लूट लेना. मस्त प्लॉट है. ये करते हैं बेसिकली. ये दिस इज़ व्हाट क्या कह दिया तुमने, मीम डाल दिया. देखो ज़रा कहाँ डाला है मीम. डाला कहाँ है
मेरे को तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा। मीम्स वाले में होना चाहिए ना, नहीं दिख रहा मेरे को। What's going on? I'm reading my fan fiction. By the way, call everyone from the Discord. Yeah, what the hell are they doing there? बैठे बैठे क्या कर रहे हो यहाँ पर भाई? मीम मेरे को दिख नहीं रहा वैसे तो, बट ठीक है, आरपीजी का फैन फिक्शन भी आ चुका है। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी एंड देन विल कट बैक टू द मीम व्हेटएवर इट इज। ओजी ब्लूअर ने मीम अपलोड डाल दिया, पता नहीं कहाँ डाला यार, कहाँ डाला तुमने भाई कजन? ओके जेनो, तो सिर्फ 5 गैंग्स बच गए हैं, बाकी गैंग्स को डक ने साफ कर दिया। रेडेक्स, डक सारे गैंग्स के पीछे पड़ा है लेकिन ब्लैक ड्रैगन फ्लाई के पीछे नहीं। मुझे लगता है डक ब्लैक ड्रैगन फ्लाई के लिए काम करता है। ओह नो, तो ये बात है। जेनो और उसके मॉन्ट्स मिलकर प्लान बनाते हैं। कुछ देर बाद जेनो अपने बेस पे अड्डे पे से बाहर आती है। बाहर आकर जेनो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। री आ गया है। री रिमेंबर जो हमारे उसमें था, पार्टी में था। हेलो जेनो। हाय री, क्या बात है? नेहा आज कोई इंटरव्यू लेने लगी है। अच्छा मुझे दिखाओ। इंटरव्यू नॉट नेसेसरी मतलब? चलो कोई देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा। आज की स्पेशल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर डोनाल्ड डक। प्लीज़ तालियों के साथ स्वागत करें। हाँ, मैं नहीं कर रही स्वागत। डक, नमस्ते नाइट सिटी। डक जाकर बैठ जाता है। नेहा, तो मिस्टर डक, लोगों का सवाल है कि आप हमेशा गैंगस्टर्स के पीछे पड़े रहते हो और सिटी के बारे में कुछ सोचते नहीं। डक बोलते हैं, पहले इन गैंगस्टर्स को साफ कर दूं, फिर मैं बनाऊंगा अखंड नाइट्स। सॉरी, लॉर्ड, अखंड नाइट सिटी बनाएंगे बंदा ये। ओह मिस्टर डक, ये तो एकदम मतलब इतना फेंकने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, पर कोई नहीं, ठीक है। अखंड, ठीक है भाई, अखंड नाइट सिटी बनेगा। और फिर अच्छी बात है, ये तो पसंद आया। आप कुछ डिफरेंट सवाल पूछो। अच्छा, ही इज़ डिमांडिंग, वाह, ही इज़ लाइक एक्चुअली डिमांडिंग। ओके कूल, ओके ठीक है। सोल किंग गेम खेलेंगे भाई, कभी तो मेरे को रिलैक्स करने दो। आज फैन फिक्शन फ्राइडे है, हम फैन फिक्शन पढ़ेंगे अपनी। और ये एक्चुअली स्टे हियर, यू विल रियलाइज हाउ कूल दिस फैन फिक्शन इज। इट्स एब्सोल्युटली मार्वलस। अभी तो तोतला भी आया था। डू नॉट क्लिप दैट एट ऑल, आई एम टेलिंग यू। If anyone makes that go viral, I swear to God, you wait to watch. I'm a gangster. Okay, अच्छी बात है ये तो। Okay, हाँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मैं एक फार्मर के घर में पैदा हुआ था और सब किसान थे, लेकिन मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था। आपका नाम डक हुआ है क्योंकि मुझे डक बहुत पसंद है। हाँ, I also like blueberry. That's why my name is blueberry. Stupid. Okay, anyways, कुछ देर बाद तो ये था मिस्टर डक का इंटरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जेनो, कितना बोरिंग आया ये डक, आज कुछ स्पेशल नहीं हो रहा क्या? री, एनिमे लैंड में एंट्री टिकट पर 60% ऑफ है। ये हुई ना बात, चलो एनिमे लैंड। ओके, जेनो एनिमे लैंड पहुंच गई, एक टिकट परचेज किया और अंदर गई। अंदर का माहौल बहुत अलग था। सारे एनिमे कैरेक्टर्स के रोबोट वहाँ घूम रहे थे। जेनो सबसे पहले अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर गोजो से मिलती है। वाओ, ओके, आई लाइक दैट। वाओ, गोजो का रोबोट। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? जेनो गोजो को और जोर से हक करती है और ओ नहीं, थैंक्स, नोबडी सॉ दैट। उसके बाद जेनो उसके फेवरेट पोकेमॉन गेंगार से मिलती है। उसके बाद जेनो गोकू, साइतामा, अन्या, जोजो, माओचान एक्सेट्रा सबसे मिलती है। जेनो, री, यस मैम, क्या इन रोबोट को घर नहीं ले जा सकते? ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरत पड़ेगी। मुझे गोजो Oh Lord, this is something that should not be disclosed to people. This is something that should stay with me. Oh God. आपने रे ज़ीरो देखा है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है। I'm not a isekai fan, but yeah, I would like to. Hopefully I'll get to it, but yeah. Okay.
मुझे गोजो को ले जाना है। ठीक है, आप एनिमे लैंड के ऑफिशियल से मिलिए। ओह माय गॉड, इज दिस वेयर द गोजो थिंगी स्टार्ट्स? ओह नो यार, अभी तक चल रहा था यार। ओके एनीवेज, चलो ज़ेनो ऑफिशियल से मिलती है और सारी बात बताती है। ऑफिशियल ज़ेनो को एक फॉर्म देता है, वो बोलता है कि ये फिर के गवर्नमेंट ऑफिस में दे दो। ज़ेनो गवर्नमेंट ऑफिस जाकर वो वर्कर्स को फॉर्म दे देती है। मैडम क्या आपकी आईडी दे सकते हो, वेरीफाई करनी है। ज़ेनो अपनी आईडी देती है, वर्कर आईडी को चेक करता है और वर्कर थोड़ा डाउट करता है। मैडम क्या ये आपकी ही आईडी है? हाँ मेरी है। ठीक है फिर, सोचती है ज़ेनो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसकी किसकी थी, लगता है पता करना होगा। आप ले जा सकती हो, शुक्रिया। ज़ेनो वहाँ से बाहर आती है और वो वर्कर किसी को कॉल करके उसके आईडी के बारे में बताती है। ज़ेनो गोजो के रोबोट के साथ लेके घर जाती है। घर पे ज़ेनो पहली साय और को कॉल करके बताती है कि मेरी आईडी किसका था, पता लगाओ। ज़ेनो घर के अंदर गोजो के रोबोट को देख कर खुश हो जाती है और तभी उसको एक अननोन पर्सन का मैसेज आता है। मैसेज में था, अल्फ़ा और बाकियों की डेथ के पीछे कौन था, अगर जानने चाहती हो तो बार में आकर मिलो। क्यों भाई, वाई एट अ बार? हाँ, इतना पीने का शौक लोगों को, माई गॉड्स। Oh my god, people be weird. Okay. ठीक है, चैप्टर 8। ज़ेनो बार के पास पहुंच गई है। बार के बाहर बहुत सिक्योरिटी थी। ज़ेनो अंदर जाती है। एक वेटर आता है और ज़ेनो को बोलता है, आप मेरे साथ आइए। ज़ेनो उसके पीछे जाती है। वेटर ज़ेनो को एक रूम के पास ले जाता है। वेटर बोलता है, वो आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ेनो अंदर जाती है और अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। ओल्ड मैन, बुढ़ा। ओके, स्वागत है, यहाँ बैठ जाओ। ज़ेनो उसके सामने जाकर बैठ जाती है। हाँ, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं हूँ खाबेयोशी, ब्लैक ड्रैगनफ्लाई का लीडर। ज़ेनो ये सुनकर हैरान थी। सोचती है, ओ तो ये है लीडर, लेकिन उसने मुझे क्यों बुलाया? खाबेयोशी। ओके, खाबेयोशी। उस दिन पुलिस को मेरे आदमियों ने इन्फॉर्म किया था कि फिनिक्स गैंग पार्टी कर रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम ही कैसे डरा हो। ज़ेनो बोलती है, लगता है तुम्हारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो मुझसे क्या चाहते हो? खाबेयोशी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ये गैंग पॉपुलर्स को इसको बंद कर दो। तुम्हारे आने से लोगों के बीच में तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और हमारा कम हो रही है। पिछले 30 साल से हमारी गैंग टॉप पर है और मैं नहीं चाहता कि कोई और गैंग टॉप करे, तो अपना गैंग बंद करो। ज़ेनो, और गैंग में नहीं करूँगी, और अगर मैं नहीं करूँगी तो? खाबे बोलता है, गवर्नमेंट हमारे साथ है और हम तुम्हारे गैंग के ऊपर हमला करके तुम सबको मार डालेंगे। ओके। ज़ेनो हंस के बोलती है, अब मेरी yeah, this is so like, it is funny, right? I am loving this story, Goku Gamer. Actually, you should actually pay attention to how cool this story is, but it's absolutely adorable. Okay, ज़ेनो बोलती है हंसकर, अब मेरी बात सुन ले बड्डे, मैं अपनी गैंग को बंद नहीं करूँगी और टॉप करके रहूँगी। बाकी रही गवर्नमेंट की बात, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करेंगे और सबको मार भी सकते हैं, डक को भी। और तुम होगे बड़े ख़तरनाक इंसान, लेकिन मेरी गैंग भी किसी से कम नहीं है। खाबेयोशी बोलता है, तो अगर यही तुम चाहती हो तो ठीक है। आज से ठीक 1 मंथ बाद नाइट सिटी के सबसे बड़े पार्क में तुम्हारा और मेरे गैंग के बीच लड़ाई होगी। पुलिस बीच में नहीं आएगी और वही फैसला हो जाएगा कि ऐसे चैलेंज समझ सकती हो। ज़ेनो बोलती है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ ना। ज़ेनो वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने गैंग के पास आती है और सबको बोलती है, जल्दी मुझे हॉल में मिलो। पर्पल रोज सारे मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ठीक 1 मंथ बाद हम लोग ब्लैक ड्रैगनफ्लाई गैंग से लड़ाई करने वाले हैं, तो जिसको जो तैयारी करनी है वो अभी से स्टार्ट कर दे। लड़ाई के बीच पुलिस नहीं आने वाली है, तो अब सब जाओ और लड़ाई की तैयारी शुरू करो। और सब चले जाते हैं, बस ज़ेनो के मॉल्स रुक जाते हैं। ना ज़ेनो उसके साथ कुछ प्राइवेट प्लान्स बनाती है। ना नाइट में ज़ेनो अपने रूम में गोजो के साथ बैठी हुई थी। नो 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 नो, This is something I am not reading. Absolutely not.
ओके ओके जेनो बाकी को देखती है ब्रूसली अपनी ब्रूसली का वाइफ नीना के नीना who's नीना ली हाउ डिड आई नॉट नो when did you get a wife dude नीना के साथ मूवी देख रहे थे हंसिका घोड़े बेचकर सो रही थी अक्षय रेरेक्स लॉस्केट मिलकर ब्रेन रॉट बातें कर रहे थे राइटर ये सारी बातें लिख रहा था तेंगन नेहा के इंटरव्यू शो में गया था ओके सो ऑल ऑफ माई जेनो फैम are there in the story but none of them are in my chat how unfair is that but anyways Xeno तो ये टेंगन इंटरव्यू दे रहा है भाई उसको इंटरव्यू लगाओ दिखाओ ओके इंटरव्यू हेलो एवरीवन मैं हूँ आपकी हुस्नेहा आज के इंटरव्यू में सबका स्वागत है आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर टेंगन तालियों से उनका स्वागत करा जाए हेलो भाइयों और उनकी Oh my god, you cannot. Dude, what is this? उनकी बहनों. Wow. So, Mrs. Tengen, आपने इतनी सारी लड़कियों से शादी क्यों की? मेरी मर्जी, मैं गिनीज बुक में अपना नाम देना चाहता हूँ और मैं बहुत जल्द एक शादी करने वाला हूँ. Wow. I cannot with this story. I just cannot. तो कौन है वो बदकिस्मत मतलब खुशकिस्मत लड़की उसका नाम है मंजलिका ओके मंजलिका वाओ ओ बताइयो कुछ देर तक इंटरव्यू चलने के बाद नेहा तो ये था मिस्टर तेंगन के साथ इंटरव्यू उम्मीद है आपको पसंद आया भाई स्टार्टिंग ऐसा था मुझे पूरा इंटरव्यू चाहिए रॉन आई वांट पूरा इंटरव्यू तेंगन का पूरा इंटरव्यू निकाल के लाओ मुझे दैट्स इट जेनो अच्छा तेंगन की एक और शादी हो रही है जेनो जल्दी से तेंगन को कॉल करती है तेंगन यहाँ हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हो और तुम हाँ शादी कर रहे हो तेंगन लड़ाई से पहले थोड़ी सी खुशी मनाने दो अच्छा तेंगन बहुत रिक्वेस्ट करता है और जेनो फाइनली मान लेती है जेनो ठीक है ये आखिरी बार लेकिन उसके बाद जो भी काम करना है सब लड़ाई के बाद जेनो बाकी सबको चेक करने के बाद सो जाती है मॉर्निंग में दिस इज नाइस ओके I'll still read this part because this is nice I like it hello Avik जेनो ओके मॉर्निंग जेनो सो रही थी और गोजो ब्रेकफास्ट लेकर उसके पास आता है वाओ ओनली इफ आई एवर भाई काश फ्यूचर में ऐसा हो ब्रो आई वुड लव टू हैव अ फ्यूचर आई वेक अप एंड गोजो गेट्स अ ब्रेकफास्ट वही की जेनो तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है जेनो उठती है और ब्रश करने वाली टैबलेट से 1 मिनट में ब्रश कर लेती है अच्छा दिस इज़ फ्यूचर ओके फिर ब्रेकफास्ट करती है और फिर चलती है बाहर क्योंकि आज था तेंगन की शादी है ऑलराइट तेंगन की शादी हो रही थी सारे मेम्बर्स वहीं पर थे जेनो पहुंचती है और शादी स्टार्ट होती है तेंगन मुझे की शादी में पंडित बना था मिस्टर राइटर ओके तेंगन वेट अ मिनट तुम कब से पंडित बन गए राइटर ये मेरा एक सपना है जिससे मैं स्टोरी में पूरा कर रहा हूँ ओके दिस इज़ लाइक फोर्थ वॉल ब्रेक हो रहा है यहाँ पर ठीक है कूल शादी स्टार्ट होती है मिस्टर राइटर मंत्र पढ़ता है मुझे नहीं आता ये सो आई स्किप इट राइटर तेंगन से पूछता है क्या तुम मंजगा को आप एज योर वाइफ कबूल करते अरे वाह मतलब इसमें तीन रिलीजन में शादी हो रही है मतलब कबूल करते हो यस अरे 3 बार बोलना पड़ता है पर कोई बात नहीं राइटर मंजगा से पूछता है क्या तुम तेंगन को एज योर हस्बैंड कबूल करते हो से यू बी लाइक ओके यस ओके फाइन राइटर बोलता है तो रुके oh my god I'm sorry Tengen but this is pretty private but okay oh I'm supposed to script this but this is good man apparently अब जब तक तेंगन यहाँ पर नहीं है तो वो आता कौन सा लाइफ में बट अगर जब तक नहीं है तब तक तो करने दो ना क्या फ़र्क पड़ता है ओके लेकिन ऐसा तो शादी नहीं होती बेटा ये न्यू जनरेशन वाली मैरिज है यहाँ सारे रिलीजन से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके शादी होती है दूसरी ओर जेनो शादी से ज़्यादा प्लान्स पर फोकस करी थी तेंगन की शादी देखकर नाइस सोचती है बस एक बार ये लड़ाई ख़त्म हो जाने दो इस तेंगन की खैर नहीं लड़ाई के टाइम पर शादी करता है नाइस ओके वेल नो हेट फॉर तेंगन ओके मेंशन इट ओके उनकी नहीं पूरा फुल वेट यार ये लोग आते नहीं है लाइव में
आई डोंट लाइक देम एट ऑल. जितने लोग यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं उन सबकी बजाओ यार, जो लाइव में नहीं आते स्टोरी में सबकी बजाओ. आई डोंट माइंड. वो पकड़ने दो. ओके. शादी ख़त्म हुई. सब एक साथ खाना खा रहे थे. जेनो सबको प्लान के बारे में बताती है. खाने के बाद सारे मेंबर्स सीरियस हो गए जाते हैं. सब लोग अब ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करने लगे. जेनो सबकी ट्रेनिंग से खुश थी. Oh my god, I'm proud of you, my boys and girls. After a month, सब लड़ाई पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं. जाने से पहले जेनो सबको एक स्पीच देती है और सबको जोश से पढ़ती है. Oh my god, this is my Erwin moment. अपने हाथों को हथियार बना लो. अपनी सांसों के को आंधियों में बदल दो. टाइम आ चुका है कि ब्लैक ड्रैगन फ्लाई गैंग को साफ करने का. सारे बोलो जय पर्पल रोज. No, let's change this. What could it be? नहीं रहने दो यार, अभी मेरे को दिमाग में चल नहीं रहा. बाद में करेंगे. ओके, सब लोग भी बोल जाते हैं. सब नाइट सिटी के Oh my god, Tengen is here in the chat. आप कब से? आपको तो मतलब आप तो आते ही नहीं हो यहाँ पर. सॉरी ब्रो. अब तो जो स्टोरी में होगा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. अब तो मैं कह रही हूँ full go on full the writer has full liberty to do whatever, to name all the Discord members who don't show up here and write anything about them. Sorry Tengen, but sorry not sorry. You never show up. Let's go. खाबियोशी, क्या तुम लड़ पाओगे? जेनो, हम तुम्हें हरा देंगे. आज मेरे पास गाड़ी है. Oh, nice. Okay, let me go into the mode. खाबियोशी बोलता है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, डक है, पूरी पुलिस फोर्स का सपोर्ट है. तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास राइटर है. खाबियोशी शुक. इसमें इस टाइप करके ओ लिख दो. ओ डबल ओ. शुक. खाबे, तो ठीक है, लड़ाई स्टार्ट करते हैं. सब अपने अपने गैंग के पास वापस आते हैं. खाबियोशी चिल्ला के, अबे ऐसे कौन चिल्लाता है? कौन सा ही स्टिल लिविंग इन पता नहीं कौन सा 18th सेंचुरी गोइंग लाइक हमला. नो थैंक्स. इतने बोलने साथ के बाद ही खाबियोशी खास नहीं लगता है क्योंकि वो बुढ़ा हो जाता है. हाँ, ऑफ कोर्स. Oh, mine is better. Purple Rose. Assemble. लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. पर्पल रोज के सारे मेंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी. सबके पास था फ्यूचरिक स्वॉर्ड्स, लेजर लाइट स्वॉर्ड्स, गन्स, टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर, जेट्स, डैगर्स, एडवांस फायर क्रैकर्स, हैकिंग टूल्स. जेनो के पास ही उसकी स्पेशल खाताना. बाय द वे, इसमें मेका सूट भी होना चाहिए. फाइटर जॉकेट, आई मीन मेका उदय, है ना? वी शुड हैव दैट. जेनो कताना से एक करके सारे कमज़ोर लोगों को मार देती है और उसके साथ मेंबर्स भी. ब्रूस ली सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था. तभी उसके सामने आ जाता है खाबियोशी के हिटमैन बोबो. You know what? Oh my god! I'll tell you what. So Bobo, there was this my kindergarten teacher. She had a dog, a pet dog, a very furry brown colored. बहुत ही उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा फरी थे, मतलब और कर्ली थे. And that little dog, his name was Bobo. That's crazy. Nice. Okay. बोबो के हाथ में था लेजर लाइट स्वॉर्ड. ब्रूसले के हाथ में था फ्यूचरिस्टिक स्वॉर्ड. Okay. I know what a light sword does. What does a futuristic sword do? Hello, my friend. Bruce be like, I'm never gonna be your friend, bro. Please. दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. दोनों स्वॉर्ड फाइट में अच्छे थे, इसलिए दोनों के एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे. तभी ब्रूस अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ करके बोबो के स्वॉर्ड को तोड़ देता है. बोबो के हाथ सिर के थे, इसलिए ब्रूस उसके दोनों हाथों पर हमला करता है और दोनों को तोड़ देता है. बोबो नीचे गिर जाता है और ब्रूस उसको मार डालता है. सारे के सामने होता है खाबियोशी के लेफ्ट हैंड रॉबिन पूरी मास्क वगैरह लगा के, सब कुछ वगैरह लगा कर आया था. रॉबिन के पास था गन्स, साई के पास था डैगर्स. दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है. यार ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास गन्स है ब्रो. Like he can like shoot the hell, bro. He be like, dude, poof, and it's done. Okay, anyways, I'm sure Sai is more talented. Okay, रॉबिन दूसरे
उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साई बहुत फास्ट था और उसके पास पहुंच जाता है, उसके फेस पर अटैक करता है। अटैक से रॉबिन का मास्क टूट जाता है, उसका फेस दिखने लगता है और और ये बात पता चलता है कि रॉबिन लड़का नहीं लड़की थी। ओहो, ओह माय गॉड, साई, योर अपोनेंट इज गर्ल। Now, is this gonna turn into a romance? Let's see. Okay. ये तो बहुत ही वो फाइट है कि मतलब ये कमेंट थोड़ा वो नहीं लग रहा। क्या बोलते हैं उसको? I don't know. Okay, anyways, who cares? ओए, शर्म नहीं आती? लड़की हो के लड़कों का वाला नाम रखती हो तो क्या हो गया? रखने दो ना। एनीवेज, रॉबिन, तो क्या अब लड़की हूँ पता चल गया ना, तो क्या मुझे नहीं मारोगे? नहीं, तुमसे लड़ने का बेटर तरीका है मेरे पास। ए यार, इसमें कोई जेंडर रोल्स का मिक्सअप मत करना ब्रो। इट्स अपेरेंटली माई गैंग हैज़ ऑल वुमेन एंड मेन, बट ओके चलो चलते हैं। यार इसमें कोई वुमेन कैरेक्टर नहीं है क्या? हाँ। रॉबिन साई को गोली मारता है, लेकिन साई उससे बचकर रॉबिन को पकड़ लेता है और उसके फेस पर थप्पड़ मारने लगता है। हैं? What is that? साई इतने थप्पड़ मारता है कि रॉबिन के गाल लाल हो जाते हैं। How is that better? You just damn bro. You're going down on a slap fight. ये क्या है? Anyways, I hope I mean fist fight थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। fist fight होना चाहिए था, but okay. चलो भाई, रोने लग जाती है वो। मुझे जाने दो, मेरे गालों में दर्द हो रहा है। अरे यार, ऐसे कौन सी रॉबिन यार, जाके उसको भी मारना था ना, एक खिंचा के साय को। या ऐसे कैसे यार? शी इज़ माई अपोनेंट बट आई स्टिल हैव टू से दिस। भाई ऐसे तो नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं। नाउ इट्स अ स्टोरी, कांट हेल्प इट। ये थप्पड़ थे लड़कों वाले नाम रखने के लिए और अब मरने के लिए जाओ। अबे ये थोड़ी ना होता है। नो ब्रो, आई डिसअप्रूव, बट ओके, इट्स अ स्टोरी लाइन, सो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। साई अपने डैगर निकालता है और रॉबिन को मार डालता है। चलो ठीक है, ओके। सो ही वॉन द फाइट। साई विन्स। चैप्टर 9 ends. चैप्टर 10। काबियोशी का राइट हैंड एक तगड़ा इंसान होता है और सबको मारने लगता है। तभी रेडेक्स जेट से उड़ते हुए, ओहो, सो रेडेक्स गॉट अ फाइटर जेट ब्रो। मतलब साई को एक चक्कू पकड़ा दिया और इस बंदे को जेट दे दिया है। ऐसे क्यों? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी हो रही है, पर कोई बात नहीं। चलो ठीक है। रेडिक्स गॉट अ जेट ब्रो से उड़ते हुए इंसान पर गोली चलाता है। भाई इंसान पे जेट से गोली चला रहा है बंदा, क्यों? ओके, एनीवेज, उसके बाद रेडिक्स उसके ऊपर एक रॉकेट चलाता है। मतलब इतना तगड़ा इंसान था कि रॉकेट चाहिए मारने के लिए। रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है, वो इंसान गायब हो जाता है। ओके, ये वाला तो आसान था। ऑब्वियसली यू गॉट अ जेट ब्रो, ऑब्वियसली इट्स इजी। ज़ेनो एंड काबियोशी फाइनली आमने सामने। भाई मैं बुड्ढे से की लड़ाई कर रही हूँ, उसको तो एक मारने में टाइम थोड़ी लगेगा। ओके, एनीवेज, ज़ेनो एंड काबियोशी फाइनली आमने सामने आते हैं। काबियोशी के पास भी कताना होता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। मैं बुड्ढे से लड़ रही हूँ यार, कोई बात नहीं। काबियोशी भले ही बुड्ढा हो, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत ताकत है। अच्छा, ये क्यों भाई? ये हंटर वाला बुड्ढा है क्या? ओ, वी कैन इमेजिन दैट। दिस इज लाइक एनिमे थ्योरी। ऑल द बुड्ढास आर जस्ट गुड, just really good. I mean, he's got a katana, right? I think I can. Oh, wait. You know how I imagine him? अगर मैं बुड्ढे से लड़ाई कर भी रही हूँ तो बुड्ढा केपेबल होना चाहिए, जैसे यामामोतो from Bleach. Yup, he's that strong. चलो चलते हैं। नो, दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, लेकिन ज़ेनो के पास काबियोशी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऑब्वियसली वो बुढ़ा है। ज़ेनो काबियोशी को नीचे गिरा देती हैं। तो बताओ, काट दिया जाए या अरे ये कैसे डालोगे? है? चलो कोई बात नहीं, या चीर दिया जाए, मार दिया जाए या तो छोड़ दिया जाए होता है।
अरे ठीक है ना, नहीं आता है मेरे को डायलॉग। बंदा मरते मरते भी मेरे को बता रहा है कि कौन सा डायलॉग होना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा ओके, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, सीक्रेट की बात बताता हूँ। ओके बताओ भाई, कान बताओ क्या। अरे कौन सा सीक्रेट, मुझे तुम्हारी गैंग के बारे में नहीं जानना। तुम जिसके आईडी यूज़ करते हो उसके बारे में। ओह ये तो इम्पोर्टेंट बात है यार, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। दिस आई वॉन्ट टू नो। ये तो बंदा सही खेल रहा है। चलो कोई नहीं, तुम जिसके ठीक है, ये तो बस एक आईडी है और पता नहीं उसके पीछे सब क्यों पड़े रहते हैं। और तुम्हें कैसे पता चला? गवर्नमेंट के ऑफिस ने बताया, तुम शायद कोई एनिमे रोबोट रजिस्टर करके घर ले गई थी। ओह शूट, वही प्रॉब्लम होगी मेरी, यही प्रॉब्लम मैं कह रही थी। गोजो का थोड़ा प्रॉब्लम होगा भाई, मतलब गोजो जहाँ होता है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों यार, एक अच्छा स्पेंड करने दो ना टाइम मेरे को। नहीं देम जाकर जो भी है वो बताओ किसका था ये आईडी। ड्रैक्सन, ये तो मेरे पापा का है, मतलब जेनो के पापा का है इस स्टोरी में। ये आईडी था ड्रैक्सन सोल्तार का। डैम ब्रो, सोल्तार। वो जेनो शॉक थी, मैं भी सेम। वो क्या रिएक्शन दे समझ नहीं पा रही थी तभी। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? अरे उसके नहीं बोलते यार, उनके इट्स माय डैड ब्रो। ड्रैक्सन हमारे लिए काम करता था, उसकी एक और इंसान की वजह से हमारी गैंग फर्स्ट पर पहुंची थी। नो, ओह नो ब्रो, ये तो प्लॉट पे ट्विस्ट हो गया। व्हाट द हेल, व्हाट? तो वो उस दुनिया में नहीं है। यस वो मर चुका है। अबे ये तो शुरू होते ही एंड हो गया। What happened? Damn bro, my dad is dead apparently in the story. And okay. Okay. Anyways, ठीक है आगे चलते हैं। क्या तुम मिशेल को जानते हो? डक ही मिशेल है, उसने अपना नाम चेंज कर दिया था और आईडी भी। उसकी ओल्ड आईडी मेरे घर पे है। ड्रैक्सन की डेथ। मिशेल कौन था? एक मिनट यार, रॉन, आई फॉरगॉट। हु इज मिशेल? और ये डक कौन था? ओह नो, डैम। एनीवन वांट्स टू वॉच बॉलीवुड मूवी? अबे बॉलीवुड मूवी यहाँ चल रही है सामने, मेरे सामने। डैम ब्रो। नाइस। चमक चलो। अरे यहाँ हो गया पूरा चमक चलो। wanna be my चमक चलो। no, forget it। यार ये तो बहुत ही ट्रैजिक हो गया एकदम, दी ट्रैजिक टर्न ले लिया। मिशेल कौन था यार? मिशेल कौन था वैसे? when did we see the mention of Michelle before in the story? I forgot। Nick dude, you're not alone। आपके डैड का फ्रेंड था स्टोरी में, स्टार्टिंग में था, उसके ढूंढने की बात करते थे। ओह हाँ, यस got it, समझ गई। I got it। Nick, you're not alone. I'm sorry, but this is like an Indian and English mixed story, so I'm sure it's going to be difficult for you to understand. But then, let's wait for the next one. RPG has written a fan fiction as well, but this is a very interesting story. What I'm going to do is probably I'm going to write it, translate it into English, and then maybe you're going to have fun. But you won't get the reference because there are a lot of like comic reference of like Indian movies. So, Xeno, are you saving money for prototype? I'm budgeting my meals for next week's to get it since it's on sale June 6th. Prototype? Oh, the prototype. Yes. I don't know, bro. Let me see. I don't know how much it is for. But Nick, dude, please don't feel alone. Don't worry. I'm getting to English. Don't worry about that. Let's continue with the story. I don't want to interrupt. Let's finish this. Okay. ड्रैक्सन की डेथ कैसी हुई थी? मिशेल यानी डक ने मारा है। ड्रैक्सन पॉलिटिक्स में आना चाहता था। डक उसका दोस्त था और राइवल भी। ड्रैक्सन ने के पॉलिटिशियन बनने के चांसेस ज़्यादा थे और डक इसी बात से जलता था और इसलिए उसने उसको दोस्त को धोखा देकर उसको मार दिया और डक पॉलिटिशियन बन गए और अब फाइनली वो नाइट सिटी के मिनिस्टर बन गए हैं इतने साल बाद। मेरा भी गाने दे रही थी मैं।
इस डक की ना मैं ऐसा बच जाऊंगी ना। ओके, जेनो को गुस्सा आ रहा था, अब वो सोच लेती है कि डक को वो ज़रूर मारेगी। ऑब्वियसली ब्रो, ही गोना डाई ब्रो, ही गोना डाई फ्रॉम हिज हैंड्स। ओके, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? लोग तुम्हें ले के नाम से जाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली नाम है जेनो, और ड्रैक्सन तुम्हारे पिताजी थे। Damn bro, ये बात और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और डक और कोई नहीं। उसने मेरे पापा को मार डाला और तुमने कुछ नहीं किया। अबे वो क्यों करेगा, उसका गैंग का मेंबर है भाई। चलो कोई नहीं, मुझे बस प्रॉफिट चाहिए और रिजल्ट्स भी, और कोई जिए या मरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेक सेंस, पड़ेगा भी नहीं, जैसे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम सिर्फ मरोगे। गुड गुड। खाबिशी कुछ बोलता, जेनो उससे पहले जेनो ने उसको खताना से उसे काट देती है। ठीक है, गुड। ब्लैक ड्रैगन फ्लाई के सारे मेंबर साफ हो चुके थे। जेनो के मॉन्स उसके पास आते हैं। साई, क्या तुम्हें पता लगा कि ये किसकी आईडी है? हाँ, ये किसी ड्रैक्सन के नाम के इंसान का था। गाइस, इस डक को हमें करना होगा, मारना होगा, हमें मारना होगा। जेनो पूरी बात बताती है। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? मॉन्स हाँ बोलते हैं। ऑब्वियसली यार, ऐसे तो नहीं। आई वॉन्ट देम ब्रो, आई डू वॉन्ट देम विथ मी, बट आई होप दे विल बी विथ मी। जेनो, चलो खाबियोशी के घर, वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। जेनो यहाँ के सारे काम स्वॉटफिश को देती है और अपने 3 मॉड्स के साथ खाबियोशी के घर जाती है। अरे स्वॉटफिश भी he's there bro, he's there too। घर के बाहर कुछ गार्ड्स को सबको मार दिया है और फिर सब अंदर जाते हैं। सब अंदर सबूत ढूंढने लगते हैं डक के खिलाफ। जेनो बेसमेंट के अंदर जाती है और वहाँ देखने लगती है। जेनो पुराने बॉक्स को चेक करती है और उसके वहाँ से अपने पापा की फ़ोटोज़ मिलती हैं। जेनो उस फोटो को देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली इमोशनल। Actually, I call my dad, so I'm gonna go with dad, okay? Dad, मैं उस मेशर को ज़रूर मार डालूंगी और आपका बदला ज़रूर लूँगी। जेनो बेसमेंट से बाहर आती है और बाकियों को डक के खिलाफ कुछ मिलता है। उसका पुराना आईडी जिसमें उसका नाम मिशेल होता है। लगता है ये सबूत काफ़ी नहीं। खैर, सबूत छोड़ो, हम उसको सीधा मार डालते हैं। Obviously bro, why do you need सबूत? What do you need for? Just go and kill him bro. Night, जेनो अपने घर पर थी और री उसको बोलता है कि आपको न्यूज़ देखना चाहिए। Okay, let's watch news. Now, Nick, Papa means dad. So, yeah, okay. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। ब्रेकिंग न्यूज़, मिस्टर डक ने लिया बड़ा फैसला। सूचना खबर के मुताबिक ये बात पता चला है कि मिस्टर डक ने ये बोला है कि वो डेथ हुए लोगों की आईडी वापस से लाएंगे और जितने भी लोग हैं डेथ हुए लोगों के आईडी से नाइट सिटी में रह रहे उनके नाइट सिटी के बाहर रह रहे हैं जो उनको बाहर कर देंगे। ये मुझे पार्ट समझ नहीं आया, बट आई थिंक व्हाट ही मीन्स इस जितने लोग के आईडी हम लोग कलेक्ट करेंगे और जो लोग यहाँ पर इलीगली रह रहे वो निकल जाएंगे। क्लियरली इलीगली एंड डोनाल्ड आयरनी। तो जो भी डेथ लोगों की डेड लोगों की सो एनीवन हु इज यूजिंग आईडीज ऑफ द डेड पीपल यूज़ कर रहे हैं तो वो सावधान हो जाएं। ओके गॉट इट। सो whoever is using the IDs of the people who are dead, they're going to be kicked out. मुझे पता था ये यही करेगा। आखिरकार मैंने खाबियोशी को मार दिया है और पूरी ब्लैक ड्रैगन फ्लाई गैंग को साफ कर दिया है। डक, अब तुम नहीं बचोगे। मॉर्निंग, ओह माय गॉड, माय माइक फेल ऑफ। ओके, मॉर्निंग। जेनो सारे गैंग मेंबर्स के साथ मीटिंग करती है और ये बात डिस्कस कर रही थी कि डक को मारना है, इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से लड़ना ही क्यों ना पड़े। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म हुई और जेनो ताज़ी हवा खाने बाहर जाती है। बाहर कोने में बैठ जाती है और एनिमे देखने लगती है। हाँ यार, ब्रेक के लिए दैट्स द बेस्ट थिंग। जेनो, ओह हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी टेंशन में हूँ। टेंशन भगाने के लिए लोग स्मोक करते हैं, लेकिन मैं स्मोक नहीं करती। अच्छी बात है। जेनो री ऐसे ही बात करते रहते हैं। ठीक है, फाइनल चैप्टर। इंटरव्यू इज़ नॉट नेसेसरी, सो आई विल स्किप दिस एंड यू गाइस कैन रीड इट ऑन द थिंग। अच्छा, राइटर के, अरे ये तो राइटर के साथ इंटरव्यू था। रॉन, शुड आई रीड इट और शुड आई स्किप इट?
I mean, we can. Okay, let me read it. No, I can skip it. Okay, I'll read it. I'll read it in the thing. Yeah, पढ़ ही लूँ. थोड़ा सा बचा है ना, पढ़ लेती हूँ रहता हूँ. नेहा, so मिस्टर राइटर खुद की स्टोरी में खुद को ऐड करके कैसा लग रहा है? दिन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. नाइस. लोगों की कंप्लेन थी कि आप अपने आप के स्टोरी में जानबूझकर गोजो को मार डाला है. ओह, वो क्या है? मुझे ज़ेनो गोजो की लस्ट देखी नहीं जाती. ओके. बट डोंट वरी, मैंने कुछ सोचा है और वो पसंद आएगा अपकमिंग स्टोरीज में. ओह यार, ये तो पढ़ना ज़रूरी था. मतलब अपकमिंग स्टोरीज भी हैं. सो मिस्टर राइटर, आपकी अगली स्टोरी कौन सी है? मेरी कोई भी स्टोरी अगली नहीं होती. सब के सब ब्यूटीफुल होते हैं. एक्चुअली यू आर एक्चुअली ट्रू. ऑल ऑफ योर स्टोरीज, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक हु आर लिसनिंग टू दिस, बट आई love your stories, Ron. I'm gonna say this. These are just so good. Okay. अरे मेरा मतलब है अपकमिंग स्टोरीज. अच्छा, तो मैंने बहुत सारे सोच रखी हैं. जैसे एक स्टोरी में ज़ेनो समुराई बनेगी, एक स्टोरी में शिनोबी बनेगी, एक में पायरेट होगी और एक में ज़ॉम्बी स्टोरी, और नहीं, एक ज़ॉम्बी स्टोरी भी है. और मैंने सोचा है कि एक डिटेक्टिव पे एक पार्ट 3 बनाऊँ, और इस गैंगस्टर के पार्ट 2 के बारे में भी सोचा है. एक वर्ल्ड एंड की स्टोरी भी है, और लव स्टोरी को मत भूलना. ओह, आई लव दिस. ओह, दिस इज नाइस. ओह कूल. इतने सारे. हाँ, लेकिन मैं बिजी रहूँगा थोड़ा सा तो आजकल. ओह, इट्स ओके यार. ये तो दिस वाज गुड यार. दिस इंटरव्यू रीड करना बहुत ज़रूरी था. ओके, थैंक यू मिस्टर रॉन. दिस लुक्स रियली नाइस. निक इंडियन है. अबे निक, ये क्या था? What was this, Nick? Why would you say I am not Indian when you clearly Indian? तुम्हें सब समझ आ रही है यहाँ पर. सब बैठ के पढ़ रहा है ये इंसान. Nick dude. Okay. कुछ देर बाद हाँ. तो ये था मिस्टर राइटर के साथ इंटरव्यू. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. ज़ेनो ये सब सुन रही थी और खुश हो रही थी. ऑब्वियसली ज़ेनो वापस अंदर जाती है. गैंग के सारे लोग रेडी थे एक्शन के लिए. तो यार जाओ गाइस, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली. हम जंग करने वाले हैं, वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ. उनके पास भले ही ज़्यादा पावर है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं. आई वुड नेवर से जय पर्पल रोज, बट एनीवेज. पर्पल रोज के सारे मेंबर्स डक टावर के पास पहुंच गए. ओह माय गॉड dude, this is a straight reference, bro. Duck Tower? You tell me this is Duck Tower? Dude, ये तो मतलब पूरा ही रेफरेंस है भाई. मैं असली में नहीं करने वाली हूँ यार भाई उस बंदे से. That guy is insane to begin with. बट टावर के पास पहुंच गए और देखते हैं कि वहाँ पहले से बहुत सारे लोग सिक्योरिटी से लड़ रहे थे. पहले से ही लड़ रहे हैं. वाह, लगता है ये लोग डेड लोगों की आईडी से रहते हैं यहाँ और डक की फैसले से खुश नहीं हैं. ज़ेनो मौका का फ़ायदा उठाकर हमला कर देती है. इतने सारे लोगों को लड़ते देख डक ने सिटी के बाकी पुलिस को यहाँ बुला लिया. ज़ेनो की गैंग एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालती है और अंदर जाती है. बाहर बहुत सारे पुलिस आ गए थे, तो ज़ेनो और कुछ मेंबर्स अंदर गए और बाकी लोग बाहर पुलिस से लड़ रहे थे. ज़ेनो अंदर बहुत तेज़ी से जा रही थी और सारे गार्ड्स को बहुत ब्रूटली मारी थी. सो द सीन guys, if you want to imagine how Xeno is killing all these people, remember the scene of Black Widow where she's killing all the police officers? That's the scene, bro. That's the scene. Imagine, just imagine. ऐसा लग रहा था कि ज़ेनो अपना गुस्सा निकाल रही है. Obviously यार, honestly, I mean, if that's the backstory of Xeno, they deserve it. Xeno finally डक के रूम में बाहर पहुंच जाती है. ज़ेनो बाकियों को बाहर रुकने के लिए बोलकर अंदर गई. डक बैठकर सिगार पी रहा था. ये तो पहले ही मर जाना चाहिए सिगार पी के. एनीवेज डक, तो तुम आ ही गई, ड्रैक्सॉन की बेटी. अबे ढंग से बात कर बे. एनीवेज हाँ, और साथ में तुम्हारी मौत भी बनकर आई हूँ. अरे डेथ नहीं, मौत बोल लिखना चाहिए था यार. डायलॉग में थोड़ा वजन होना चाहिए. हाँ, और साथ में तुम्हारी मौत भी बन के आई हूँ.
हमें मार सके ये ज़माने में दम नहीं। हा ए चुप रहे, प्रेम चोड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा बाहर देखो, सारे पुलिस फोर्स आर्मी सब लोग हैं जो तुम्हारे गैंग को साफ कर सकते हैं। मीडिया भी है जो तुम्हें बदनाम करने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है तुम्हारी मॉम भी ये देख रही है। अबे मम्मी के बाद ना एक रपटा लगे ना। एनीवेज, हाँ हो जाऊंगी बाद में, लेकिन तुम्हें मार कर मेरा बदला पूरा होगा। अब तैयार हो। अबे तैयार होने की जरूरत नहीं, सीधे मार दो। तैयार क्यों होगा भाई? एनीवेज, जेनो के पास था गन एंड डक अपनी गन बाहर निकलाती है। लेट्स प्रिटेंडिंग दिस गाय इज जस्ट एनीवेज, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एसी की हवा तेज बहने लगी। एसी की हवा? एसी का यहाँ काम क्या है भाई? It's okay, bro. Oh my god, you guys. तुम लोग seriously, after all the stories, the one thing you point out is the spelling of cigar. It's okay. Damn, bro. You guys are kids, bro. You're behaving like kids. Stop. Just read the story. तभी दोनों ने अपनी एक गन निकाल। क्या बोला? तुम्हें कैसे पता चला? ये यानी तुम पीते हो? Mr. Wan, it's actually a C, but it's okay. तभी दोनों, but it's okay. It's all right. God, seriously, you cannot be. Anyways, let it go. Okay? आपके पास एसी नहीं है, पंखा चलाओ और क्या, दोनों चलता है। तभी दोनों ने अपनी गन निकाली और एक दूसरे को शूट किया। डक नीचे गिर गया। फिर जेनो डक के पास जाती है और अपनी नाइफ से उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है। एक्चुअली आई वुड डू दैट लुकिंग एट दिस बैक स्टोरी, बट जेनो उसकी आंखें निकाल देती है, उसके सारे दांत तोड़ देती है, उसका मुंह फोड़ देती है। ओके नाइस। जेनो कुछ और करती इससे पहले उसके मॉड्स आ गए और बोलने कि हमें भागना होगा यहाँ से। जेनो और बुरी तरह मारना चाहती थी, लेकिन उसको भागने पड़ा क्योंकि पुलिस एंड आर्मी बहुत ज़्यादा थी। जेनो एंड बाकी लोग कार, बाइक, जेट्स एक्सेट्रा से भागने लगे और पूरे 11 मुल्कों की पुलिस 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। आर्मी भी। वाओ, आई एम जस्ट लाइक सो फेमस, एवरीवन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड मी। एनीवेज, व्हाई यू सो ऑब्सेस्ड विद मी? Boy, I wanna know. Anyways, जेनो के लिए छुपने का कोई रास्ता नहीं था, तो जेनो सबको कांटेक्ट करती है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हम नाइट सिटी से बाहर जाना होगा। सब सामने वाले रास्ते से बाहर जाओ। सबने जेनो की बात मानी। नाइट सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच गए और वहां पर जो सिक्योरिटी थी उनके पास ग्रेनेड्स फेंक कर उनको साफ कर दिया। सिटी से बाहर आ गए। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, लेकिन पर्पल रोज गैंग छुपने में एक्सपर्ट थी, तो सब लोग छुप गए। Okay, let's go. It's time for news. Hello everyone, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट नेहा। ब्रेकिंग न्यूज़, मिस्टर डक की हुई हत्या। बताया ये जा रहा है कि पर्पल रोज की गैंग और कुछ लोकल्स मिलकर मिस्टर डक को मार डाला। पर्पल रोज के सारे गैंग मेंबर्स नाइट सिटी से बाहर भाग गए। अरे ये सारी इन्फॉर्म क्यों कर रही है? इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए इसको। उनको पकड़ नहीं पाई। अब कौन बनेगा यहाँ मिनिस्टर? और सबसे बड़ी बात, क्या पर्पल रोज गैंग वापस आएगी? नेहा सोचती है, मुझे अकेले छोड़कर सब चले गए। अबे तो तूने न्यूज़ क्यों दिया है? नहीं बताना चाहिए ना कौन कहाँ जा रहा है। ये ऐसे खबरी, तुम मेरी खबरी के अलावा पूरी दुनिया की खबरी बन रही हो। हाँ चलो, कुछ महीने बाद नेहा अपने ऑफिस से बाहर वापस आ रही थी, तभी उसको एक कार आती उसके पास एक कार आती है और कार से बाहर आती है जेनो। नेहा देखकर खुश हो जाती है, ले तुम फैमिली वापस आ गई। हाँ, आखिर नाइट सिटी को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं जब यहाँ नहीं थी तो क्या हुआ? अभी की मिनिस्टर है विमला, जो कमला पसंद की गैंग मेंबर थी। इसलिए कमला पसंद गैंग बहुत बुरे काम कर रही है, मतलब लिमिट से ज़्यादा। मतलब ऐसा कैसा हो गया विमला, ये बिमला या जुमला, इसको भाई बताना पड़ेगा। लोग कुछ नहीं बोलते। गवर्नमेंट में रूल है, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक मिनिस्टर कुछ भी करे और कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब तुम आ गई हो तो उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हम गायब हो गए थे कि ये कमला पसंद तो बहुत उड़ रही है, लगता है इसके मरने का टाइम भी आ चुका है। डोंट वरी, हमारी गैंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है और अब सिटी में ये बात बोल दो कि पर्पल रोज वापस आ गया है। नॉइस। ओके, गैंग वापस आ गया। अब मैं बहुत खुश हूँ।
मॉर्निंग न्यूज़। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दो होस्ट नेहा। एक बहुत बड़ी बात पता चली है कि कुछ महीने पहले गायब हुई पर्पल रोज गैंग वापस आ गई है और इस बार लगता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन चुके हैं। अब ये देखना होगा कि बाकी गैंग्स और सिटी साथ क्या होगा। ऐसे ही न्यूज़ से बने रहने के लिए आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा। जेनो उसके गैंग मेंबर्स एक साथ थे। गाइस, क्या तुम लोग रेडी हो नाइट सिटी में वापस धूम मचाने के लिए? धूम मचाने के लिए काफ़ी स्टूपिड हो गया, बट ओके। सब लोग यस। ये एंड वाला जय नहीं होता, बस पर्पल रोज just to be something, I think cheering to different energy, but Zeno एक evil smile करती है. Now this evil smile will have the photo of me as evil Zeno, वो बेंटन वाला यहाँ पर, ठीक है? And the end. वो ब्रो, भाई तुम लोग बॉलीवुड मूवी की बात करते हो, यहाँ तो पूरी बॉलीवुड मूवी चल गई. Dude, this is a great. Do you realize how cool this plot is? You have no idea. Hail Purple Rose is good. Yes, I like Hail Purple Rose. Bye. This is such an, actually, this is such a good plot. You don't realize that. This is a pretty cool plot. Oh my god, blue alien, long live Purple Rose. भाई तुम्हारा dragonfly तो खत्म हो गया ना? आवाज आ जंग करना. Damn, bro. Meta fan fiction. Oh, it was amazing. This, I don't know why you guys don't realize how cool this is. This is actually a Bollywood level story. This could actually be a Bollywood movie. You don't realize that. ज़रा एक लव स्टोरी भी है, लेकिन वो शायद आप यहाँ नहीं पढ़ पाओगे. हाँ यार, वो मैं I'll read it and I won't read it in public, please. I'll read it somewhere. Unless and until is it? I hope it's not 18 plus, bro. I'm not gonna read it even then. But yeah, that's gonna be pretty cool. Dude, if this gets animated, like this story, you don't realize how cool this is. I was killed off screen by a jet attack. You were with that person! Ah. यार वो स्टोरी तो मैं प्राइवेट पढ़ूंगी ना, obviously. कोई नहीं, Mr. Ron, we can all wait. Honestly, I cannot wait to read your next story. I mean, honestly, I'm so excited. Because मैं कह रही थी ना यार, this I mean, I just love how cool and how like what a variety. Yeah. So what we're looking at is we're gonna be looking at RPG story right now, and let me just download that real quick. But whoa, यार मतलब तुम लोग को लग रही है अच्छी स्टोरी तो लाइक भी कर दो यार. Honestly, especially the fact that included the Hera Fairy scene and the dialogues, everything are just so cool. These are very cool. I love them. So thank you so much, Mr. Ron. And I cannot wait to see the next part. I will definitely wait for that. अच्छा, लव स्टोरी खत्म होने दो, ठीक है, लेकिन अभी समुराई को खत्म होने दो. अच्छा ठीक है. I'll wait for all of them. केक कटा और सब में बटा, एकदम मस्त यार. I love this. I just love it. I love it too much. Okay, let's read our other. Yeah, इस स्टोरी का नाम अभी तक नहीं पता किसी को. We just know that it's a fanfic. We don't know the story right RPG. Alright then. कल रात्रि हमने पढ़ ली थी. We read all this. We read communion resolution. Damn, I forgot what chapter was it. इसका नाम नहीं होगा जब तक ख़त्म नहीं होगा. अच्छा, वाओ भाई, कौन सा चैप्टर था? अरुण तो नहीं आया था तो तक मैंने पढ़ा था. अरुण तो नहीं था. Bro, this is an epic. It's not a story, it's an epic. What chapter was I at? Chapter 5 से. Yes. Oh, yeah.
Revelation and assault. Okay. Okay, I'm in my reading. Huh. I'm in my reading mode. I'll go into my reading mode, guys. Okay. Okay. The sanctum was still trembling with the aftershock of communion. Oh wait, am I too big? Or my figure is, I need to like, is this okay? Is this fine? Am I out of the scene? No, I shouldn't have. Is this fine? Okay, so you guys can like literally like just think of this as a podcast, okay? Yeah. The sanctum was still trembling with the aftershock of communion. Ashwindana now sat on a mat, tended to by a younger disciples who carefully applied cooled oils and chanted mantras for his recuperation. His breath, though shallow, was steady. The lines of strain that had etched his forehead slowly began to ease. In the dim glow of oil lamps shaped like blooming lotuses, the entity stood still, or more accurately, drifted. Her form, intangible to most, pulsed with subtle tremors, having absorbed not only information but emotional weight through Ashwin's spirit. She had grown denser, more defined, not physical but felt. The air around her shimmered with static, and a slight gravity tugged towards her. Arun Aksa and Divyanshu Chaturvedi now approached, having done their prior job as instructed. Arun, ever intellectual, adjusted his glasses and glanced at the entity with a newfound reverence. Divyanshu, more rooted in gut and instinct, simply folded his hands and bowed slightly. "Come with us," Arun said, his voice quiet but certain. "There is more for you to see." The walk to the archives was long, winding down corridors carved out of Varanasi's bedrock centuries ago. As they walked, ancient murals danced in the torchlight, depictions of celestial alignments, apocalyptic floods, rituals of fire, and entities not unlike the entity beside them, drawn in golden ink. Divyanshu muttered as they passed one such mural. "We've always known something was meant to come, just not when." They arrived at a sealed door, a massive slab of basalt engraved with interlocking yantras. Arun knelt, opened a weathered scroll, and began chanting a special passage, invoking the primal essence of the primordial darkness. Divyanshu added his deeper voice, anchoring the chant with power. The slab shivered, symbols glowed, then recessed. The door slid open with a grinding sound that hadn't echoed in centuries. Inside was a cavernous chamber, lined with scrolls, copper-edged palm leaf manuscripts, and stone tablets. The air was heavy with the scent of age, ink, and sandalwood. In the center sat a low black monolith upon which was carved a single symbol, a spiral within a void. Arun gestured. "Oh, Adiratri, this is the..." How do you pronounce this? Puralekh Mandap. Okay. "Every cosmic record we have is filtered through here. Sit within it, and if your resonance is true, the archives will reveal all they can." The entity moved forward, her essence swirling slowly as if in hesitation, then passed through the spiral and came to rest within the pit. Her form dimmed, then pulsed, then dimmed again. The black monolith began to glow. From within, not light but void, shadows deeper than darkness itself. Whispers filled the air, but not in sound, in knowing. Arun and Divyanshu watched, silent and still.
From the pit rose visions. She saw the beginning of time as humans knew it, the birth of yugs. She saw shadows spiral cast beyond space. One foretold to return every aeon to recalibrate balance, an entity of cosmic entropy. And in every record, murals, glyphs, oral retellings, there it was, an unformed void with consciousness, a stranger among the stars drawn to earth in each age when the threads of existence frayed. The whispers grew louder now. A resonance echoed outward from the pit, stirring the glyphs across the walls. The manuscripts rustled, even though there was no wind. The copper scrolls began to hum. Then came a final vision. A tree made of galaxies, its roots drinking from the dark ocean, its branches blooming with worlds. At its center was Earth, and at Earth's center, a spark of living darkness. Its true self, long forgotten, waiting to be reclaimed. I'm sorry, do pardon me. I actually, my mom just called me. Okay, I'm just gonna increase the music a bit so that you get this kind of aura to the music, to the story. I think it's gonna help. Tell me if you can hear my voice over the music, by the way. So, yeah. Okay, let's continue. Far above the sanctum, beyond the reach of chance and cosmic quiet, Suryamandal satellites orbited Earth, keeping a silent, incessant vigil all over the planet. Now suddenly one of them registered numerous cosmic spikes emanating from a specific point on Earth and immediately relayed it back to the Mandal's headquarters. In Varanasi, dark matter levels surged to frightening levels as the resonance seeped through the entire city. Jeeth and Moya, hidden and entrenched along the riverside, immediately activated their emergency uplinks. Back in Delhi, Ritvik Hansraj stood before a digital projection. He read the new readings and frowned. The dark matter levels are spiking tremendously, and without warning, this can't be good. He turned to Irumi Indravati. We should call in Dr. Termini Devi now. We may not have long. Irumi raised an eyebrow. Are you sure? Once that woman gets involved, things will get more precarious for all of us. And you know how insatiable her temperament is whenever she finds something new and interesting. Hanje hai kya? I remember she looks like Hanje for some reason. She reminds me of Hanje. Okay. Ritvik's eyes narrowed. Ma'am, we have no choice. The entity has begun resonating with something in the city all too sudden. And the resulting cosmic spikes will soon translate into very physical consequences. Natural disasters like the likes of which none of us can handle without devastating losses. This makes it dangerous. I dare say, it is now very much a threat. Somewhere under Varanasi's sacred soil, the entity stood bathed in the silent hymn of the primordial dark, waves of pure dark matter emanating off of it, as its fragmented consciousness attempted to grasp the true meaning of the visions it had just glimpsed. Neither malevolent nor benevolent, simply questioning, probing, relentlessly seeking. But words what, or whom, or where? None could yet say. A few hours later, the first light of dawn shimmered over the Ganga, casting a golden hue upon its sacred waters. The entity stood at the riverbank, her form a subtle distortion in the air, barely perceptible to the human eye. Ashwin Rana, the Maharishi of the Kalratri sect,
stood beside her, his gaze fixed on the flowing river. "The Ganga holds memories older than time," he murmured. "Perhaps it will help you recall more regarding your true purpose here, Adiratri." Without hesitation, the entity hovered over the sacred river. Then it submerged. The water enveloped its vaguely humanoid form completely, and its consciousness expanded. Within the depths of sacred river, time lost all meaning. The entity's awareness drifted into a realm of visions. It saw ancient beings descending upon earth, their forms luminous and ethereal. They were the Navgras, the 9 celestial influences: Surya, Chandra, Mangal, Budh, Brihaspati, Shukra, Shani, Rahu and Ketu. It watches as they channel their cosmic energies, establishing the primordial balance that would guide the rhythms of life on earth. The entity felt a strange resonance with them, a shared origin in the cosmic tapestry of the solar system. The dark matter within her now pulsed vividly, reacting to the sacred waters. It was as if the river recognized her, and it in turn seemed to resonate with Earth, not as an alien world, but as a place once known, once cherished. Deep within the subterranean levels of the Surya Mandal's headquarters in Delhi, the war room pulsed with quiet urgency. Inside stood Irumi Indravati, draped in a minimalistic sari of woven graphene threads, her third eye tattoo glowing faintly. At her side, the granite chiseled form of Ritvik Hansraj, the Mandal's head of security, loomed with arms crossed, a hardened cynic, even amid the supernatural. Across from them sat the head and Grand Master of the Surya Mandal, Talvar Trivedi, stoic, lean, unnervingly calm. He gestured with a single hand. "Bring her in." The double door slid open, and in walked Dr. Chameli Devi. Pardon me. She was short, middle-aged, and unassuming at first glance, but her presence bent the air. Her black curls framed sharp eyes that scanned the room with brisk efficiency. She wore a coat stitched from indigo-dyed khadi, cloth over a kurti marked with strange sigils and symbols. A small copper pendant shaped like a rotating galaxy hung around her neck. "Dr. Chameli, how nice to have you with us again," Talvar greeted. "I trust you have already been debriefed on the situation?" Irumi pulled up a 3D hologram of the entity's arrival trajectory. I don't know if you call it trajectory or trajectory. I think it's trajectory, I guess. There's like different pronunciations. I'm confused over like British and American. The projection shimmered with the dark fractals, traces of gravitational anomalies and space-time bends. The entire projection was drenched in purple-black iridescence, dark matter signatures. "She landed in Varanasi by the banks of the Holy Ganga," Irumi said. "She's visible to the general public, but not to our cosmic energy sensors. The dark matter spikes from its resonance with our planet are getting worse," Ritvik added grimly. "The threat is present and growing," Talvar said. "Soon enough, we will see more tangible and physical devastations." Chameli narrowed her eyes, a glint of insanity mirrored with curiosity reflecting her eyes. "How ancient is this entity?" "We estimate older than our solar system," Irumi said, "maybe even predating the universe itself." At that, Chameli walked over to the side console and tapped in a code. A second hologram emerged. A chakra wheel orbiting Earth. A forgotten proctor she'd engineered decades ago under Project Vishnupad. "You'll need the chakra protocol," she said, voice calm but firm.
It's the only defense we have against extra-dimensional, semi-sentient, high-frequency entities that can be touched with physical means. Ritvir's eyes narrowed. Are you sure this chakra protocol of yours isn't going to wipe out half of North India when used? Jamili smirked. Well, only if you misalign the correct frequency of the targeting nodes, and you won't, because I'm here to make sure of it. She winked and paused, looking again at the alien entity's projected trail. This thing, it's more ancient than anything I have never seen or researched. Fascinating, she added. Seems like it's searching for something or someone, but of course that doesn't make it safe. And taking the current cosmic spikes into account, it's a very real threat. Darwar nodded once. You have the green light, Doctor. Proceed with your countermeasures. Within minutes, the chakra protocol went live. All across the upper stratosphere, a coordinated network of ancient-looking but hyper-advanced satellites, each inscribed with rotating mantras in ancient Sanskrit and bound with gemstone lattice cores, shifted into alignment. Each satellite represented one of 7 chakras. Together they formed a sacred geometry grid around the Indian subcontinent. Jamali stood at the war room's control hub. Her hands hovered over an interface shaped like an ancient spiked wheel, and she chanted. I don't know how to pronounce these, so I'm gonna leave it, okay? I'm gonna can you guys read this? Just read them, please, because I don't know how to. I know Om Namaha, but I don't know the words, so I'm gonna let it be. Okay, I'm gonna go forward. I apologize. Each chant synced with the satellites, their internal sound cores echoing the mantras in impossible frequencies, undetectable to humans but devastating to interdimensional beings. Suddenly, the Earth's atmospheric hum shifted. To the trained ear, the air itself seemed as if it was now praying. Yeah, maybe. On the banks of Ganga, the entity, still recovering from its communion with the river, staggered backward. Its form shimmered violently with a broken mirage, reverting between humanoid and shapeless in sudden bursts. Something was wrong. Its internal resonance, that stable hum of dark matter, now seemed as if it had been dissonated, like a broken sitar string. It felt itself being flattened, its awareness thinning. Its ability to hold form and thought began to fail. Its already fragmented consciousness flared erratically. Flickering like starlight behind turbulent clouds, it felt as though its entire essence was being sucked into an endless void, then pulled apart violently. Somewhere in its disintegrating awareness, it heard the ancient chants from the Mandal satellite network. They sliced through it, into it, like makeshift blades of pure cosmic energy. In their riverside shrine, cloaked in banyan groves and burnt incense, the Kalratri sect felt it instantly. Ashwin Rana dropped to his knees, clutching his forehead as if he felt the entity's peril resonate within his own mind, due to their communion's psychic link. O Adi Ratri, she is under attack. Her consciousness is shattering, cried Arun Aksa, eyes wide, his glasses flickering with violent reflection, as he feverishly checked his sensors and other contraptions. Devyanshu Chaturvedi had already begun drawing a circle of powdered ash and turmeric, each spiral resonating with a counter-frequency to the mantras raining down from above. Ashwin's voice boomed like a storm. Circle her! Anchor her! As the entity writhed in and out of coherence, the 3 men began chanting ancient tantric counterverses, attempting to shield it from its full brunt of the chakra's protocol's overwhelming cosmic ray.
their voices entwined with the earthborn resonance, channeling grounding energy into her collapsing form. With monumental effort, the entity barely managed to compress her being, condescending into a dull pulse of formless darkness. Stable. Weak, but stable. Ashwin turned to the others. We must leave. Now. Guided by their protective rites and hidden paths, the Kalratri sect's members swiftly guided the entity's presence back to the hidden monastery. There, surrounded by glyph-etched walls and sanctified soil, they placed it within the mandap, hoping the resonant cosmic energies within would temporarily assist in it in holding its fragmented consciousness together before a solution could be sought after. Ashwin slumped against the wall, his breathing shallow. What was that about? It was as if she began to almost disintegrate before our eyes, Arun said quietly. Divyanshu murmured. It was an attack. I sensed severe fluctuations in the cosmic balance, but I was too late, too hesitant to act swiftly. All three of them watched silently as the entity silently hovered above the black stone dais, confused and disoriented by the sudden attack, as it struggled to hold itself together, pulsating violently and vividly. The winds outside howled in cacophony of inhuman cries and noises, as if nature herself was making her fury felt, known to all in not so subtle manifestations. Oh, that's it. Oh, okay. All right, that's it. That's the story. Oh, okay. Yep, that's it. That's about it. Nice, bro. I'm getting it. I'm gonna be honest. So, शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी समझने में कि what is the story, because of course it has like Indian mythological elements and it was confusing to me. But I'm getting like a different. I'm getting like the plot. I'm getting understanding what's going on in the plot with like different sects and stuff, like in the Delhi and all of that, and I'm slowly understanding what's going on. And whoa, it looks so dangerous, bro. It looks so what do you call it? I mean, it looks like something just it looks urgent. I don't know how to describe it. ऐसा लग रहा है जैसे मतलब, you know, you have everything just going on, and then it seems very urgent and cosmic and something that's gonna, like, you know, the whole urgency that this story has, wherein, you know, yeah, काफी अच्छी थी. It was pretty cool. I like that story. Yeah. Sumit and Pema is no, bro, I won't read it. No. I mean, I read it. If you put it on Discord, I would love to read it again, like let's say maybe, but not here. Yeah. Yes, but I like it. It's like it keeps you. So this story, like, it keeps you integrated. Like, it just it takes all of your attention inside. That's what I feel from this story. It takes a lot of attention. No, Mr. Ron, I'm not gonna read it. I'm gonna read it when I have to, from Discord on my own personally. Yeah, the stakes have shifted and increased since now the Surya Mandal attacked her. True. And I'm feeling RPG. I mean, I don't want you to spoil the story, but this shift that we see from Chamini Devi's, like, when she did that, will that cause anything that's going to influence the world in any case, like physically, the world, the planet, the Earth itself? I'm kind of अभी आया, लेकिन स्टोरी अच्छी थी. हाँ यार, अच्छी थी actually. अभी आया मतलब you came before. Oh, you had left and then came again maybe. But yeah. Well, what happened? Discord the link pinned है. 100 story, the Discord link is pinned already. Wait, we'll have to send through mail only? क्या चीज़? क्या हो गया भाई? क्या सेंड कर रहे हैं मेरे पे? क्या हो गया? अच्छा, फिर से अभी आया हो, ठीक है. Yes, your poem. Yes. Poem हमने Discord पे भेजी है ना? If it's on the Discord, I'll have to, is it on Discord?
डिस्कॉर्ड पे ढूंढनी पड़ेगी मुझे. Wait, I got a story from Sai just now. It's like 4 minutes ago. Oh, cool, cool. Yeah, तुमने अपना poem कहाँ रखा है? But I will, yes, I'll look at it. एक minute. Lee, where did you send your poem? Where did you send it? On mail? Story time channel में है. या स्टोरी टाइम चैनल में मुझे सिर्फ उसकी स्टोरी दिख रही है. साई ने भेजी है. कैन यू लाइक इफ इट्स ओके विथ यू कैन यू लाइक कैन यू टैग मी इफ यू सेंट इट? Oh wait, I can see it. I can see it. Okay, so what I'm gonna do is I'm going to. Okay, can you see? Wait. This is the poem, and I'm gonna read it out from here. Okay. How about that? I'm gonna read it out like this. This is the channel, by the way. Whoever wanted to ask, this is the channel, and Lee has sent his story. So I'm gonna. Okay. All right. It's time for me to say, maybe the last one. Never mind. Release all. I believe this is the time. Maybe you're not who you used to be. Maybe all the feelings had gone. And maybe if later we will meet again. My one wish, don't ever ask again. All the feelings that I had left dead, like yesterday, when everything was here. And if your heart was pensive, wake up from your dreams, opening your erstwhile heart, the stories in the past. Okay. Maybe you're not who you used to be. Maybe all the feelings had gone. And maybe if later we will meet again. My one wish, don't ever ask again. All the feelings that I left dead, like yesterday. When everything was here, don't you ask again. Save it for yourself. All regrets that you were looking for. All feelings that you gave. Oh my God. Is this for the broken-hearted? Wow. This is pretty sweet. I feel like, did you like wrote it? I mean, it looks like a very solemn kind of poem. It looks like, you know, you would it's like somebody who's like, you've written for somebody who's forgotten, but you don't want to forget it, but you're still forgotten. I don't know, it's pretty bittersweet. Yeah, so it seems like that, but it's very beautiful, I would say. It is okay. It's pretty nice. Privet, Magnus. Wow, long time no see. But yeah, it's pretty beautiful. Thank you, Lee. That was beautiful. Talent, bro, talent. भाई अब पता चल रहा है कि लोगों में ये सारे मेरे मॉड्स में टैलेंट देखो. Highly relatable. Interesting. Okay, I quickly have another story that Sai sent me, and I would like to read that as well. The chapter is a pilot one, and it's like 8 pages, so I'm gonna quickly read that through as well because I just got that.
I'm not missing any other stories, so I'm gonna just complete that as well. What is wrong with my accent? Okay. Okay, why have I totally shifted from... Okay. Yeah, that's about it. Okay. Now we're gonna read a story that Sai sent me. I hope it's okay. Tomorrow is Comic-Con. Ooh, Magnus, I'm excited. That's gonna be great. Oh no. Sorry. Okay. Alright. Yes. If Lee is able to share the photos, videos, whatever, I will show them on Discord. Yeah. Oh, I'm sorry, on live. I'll try to do that. Yeah. 10:30 Moscow time. No problemo, Magnus. You can send videos. Magnus, send videos, pictures. We will show on live. Okay? Tomorrow on live, I'll show them. Before we start live, I'm going to show it to them. She accidentally opened my art. Yaw save kare kata na miche. You guys. Okay. Next story up. Let's quickly read it too. The border never slept, but it pretended. Outpost 9 was quiet that morning. Ikman, let's read this because it seems like a science fiction. Sai, before I start, is this a science fiction? Because I get the feeling that मुझे feeling उससे आ गई थी RPG से. I want to know the genre because I will read it that way क्योंकि मेरे को फिर उस तरह पढ़ना होता है तो इसलिए मुझे जानना है कि genre क्या है इसकी. And is there a title for this story? So, yeah. Oh, so it's a fantasy world. Okay. I'll read it that way then. The border never slept, but it pretended. Outpost 9 was quiet that morning. Fires burned low, rations were dry, and the men kept it to themselves. That was good. Talk led to questions. Questions led to fear. I didn't have time for either. I sat on a flat stone, strapping the last of my armor into place. Steel greaves worn at the knees. Chest plate dented near the collar. The straps were due for replacement, but they'd last another campaign. I didn't believe in wasting resources. Not out here. The western watch bell hadn't rung even once, which meant no movement in the forest. Patrols were late by 2 hours. Not unusual. Wolves or weather, likely both. If they weren't back by noon, I'd mark them dead and add a few more men on the next roster. Captain Belric approached from the central tent. His gait was even uneven. His left boot never fit right after the break in the ice tunnel 2 winters ago. Scouts haven't come back from the Ridge 3, he said. I know. Could be they ran into something? Then they're already corpses. He nodded. That was the end of it. Belric wasn't sort to argue when he knew I'd already written the report in my head. I checked my sword. It was clean, but not polished. Polishing is for parade blades and officers who've never seen real blood. The edge was sharp. That's all it needed to be. The courier arrived at dawn. No trumpet, no escort, just a single rider. Thin cloak, city leathers, half frozen and clearly lost. His horse limped from frostbite, and he didn't dismount until 2 of our guards raised spears to his neck. Green. Too clean for this place. I saw the seal before he even spoke. Velvet case, wax emblem, the Queen's mark. I stood before he could address me. Took the letter from his shaking hands. No ceremony, no salutes. Saira Vera, he said, as if saying my name earned him anything. It didn't. I cracked the seal, read it twice in silence. Orders, short, sharp, unsigned, but the handwriting was unmistakable. The kind of script that made decisions without questions, it left no room for hesitation. I folded it and slipped it beneath my breastplate. Belric, I called over my shoulder. He was already beside me. Lycophos, he said. He grunted, straight from the top then. Yes. How long? I leave in an hour.
He didn't protest, he knew better, as I handed him the patrol chart saying, change of plans. If you find them around Deep Seek, bring their bodies back. If that's not possible, burn them. Reassign their gear and retreat. Join the forces with Sergeant Barnes and hold position. He took it and said nothing more. I packed light, 1 satchel, 1 water skin, my standard issue cloak, enough coin for bribes, but not enough to make me a target. Sword, knife, 1 sealed vial of black root in case of infection. No personal items. There weren't any to bring. By second bell, I rode out. I left Outpost 9 without looking back. The path to Lycophos wasn't long, but it wasn't easy. The forest loomed on either side, silent except for the occasional sharp snap of twig or the distant howl of a wolf. I didn't mind the quiet. It left me alone with my thoughts. Thoughts I had learned to push aside, but today they refused to stay distant. The letter burned against my chest. Lycophos, the capital. The Queen's orders, not a request. And the last time I was called back. I returned in chains. She hadn't put them on me, but her silence had weighed more than iron. I'd go, I always did. This time something was different. The urgency was expected. The order was sharp, but there was weight behind it. Unspoken and deliberate. She'd said little, but it meant more than usual. The road grew rougher as I moved past the outpost. Frost coated the ground, thick and brittle. The air was colder here, sharp like the land, and warned me passing through. I passed the remains of a ruined patrol. Arrows still in the trees, no bodies, just signs, maybe wolves, maybe raiders. I couldn't be sure what killed them, but it didn't matter. Patrols were just loose groups of men, held together by necessity. Some stayed longer, some didn't stay at all. I continued on, my horse's hooves muffled by the frost. Every so often, I'll check the horizon. No signs of the scouts, no movement in the trees. The wind carried only the faintest trace of ash. The border was quiet. Well, too quiet. The road was worn trail. Once it had been a main route, but it had been forgotten. Used only by those with no choice but to pass through. Even the trees were twisted, as if they'd stopped reaching for the sun. Their branches sprawled overhead, empty. By the time I made it to the base of the ridge, the sun was high. I found 2 scouts at the clearing, Nalin and Orus, both standing, neither talking. That wasn't normal. I dismounted, drank from my water skin and nodded. Anything? Orus shook his head. No movement, just the same tracks we marked yesterday. Faded. Nalin nodded. No sign of the northern pair. They did not meet my eye. Boots were clean, hands were twitchy. Nalin kept adjusting his belt. Orus checked his bowstring twice and didn't speak again. I reached into my pack, touched the black root, still sealed. I left it there. We move in 10. Stay tight. They both nodded, too fast. Something had rattled them. They wouldn't say it. I didn't need them to. Something was coming. Something was always coming. I adjusted the sword at my side. The weight was familiar, balanced. The scouts stayed behind, too slow to keep pace. I did not wait. The sun was past its peak when I crossed the ridge. The wind had picked up again, colder than it should have been for this time of day, but still manageable. I kept moving. Cold was just cold. Lycophos was worse. I reached the summit as the bell rang from the distant citadel. Not the Queen's call yet, but close enough. A reminder. Time was moving, and I couldn't afford to fall behind. By late afternoon, the trees thinned. Stone took their place. Bare, uneven, and brittle with old frost. The road broke into scattered tracks, shaped by wheels and boots that did not want company. This was the edge. Beyond it lay the city-state. The air changed, not ash, odor. Wrong. This stretch of land had always felt off.
ruins buried deep, suns that pressed too hard. Whatever lingered here did not want a name, and I kept moving. It was old from before, and it had touched my life more than once, in many ways, and I didn't care to recall. I stopped at the edge of a narrow ravine and crouched. Blood. Fresh, not animal. Human. The signs of struggle were evident. Drag marks, broken branches, something had been dragged through here. Likely into the ravine, I couldn't guess the rest. All the scouts. I stood, my eyes scanning the surrounding areas. No bodies, but that didn't mean they were gone. I didn't waste time. There was no point in tracking whatever it did. What mattered now was reaching Lycophos as soon as possible. The scouts were lost. Mourning wouldn't bring them back. And the queen had likely never known their names, and most likely they had already been forgotten. But I hadn't. I remounted and kept going. The last stretch was steeper and rougher, but I did not slow. The city rose ahead. Sharp against the darkening sky behind the walls, something waited. And I could feel it. Just another one of the summons. Part of the same machine. It didn't matter if men froze in the snow of the cities, were rotting from the inside out. The machine kept calling. By nightfall, I had reached the city's gates. They loomed above me, towering impregnable. The guards at the entrance barely spared me a glance as I passed. They knew who I was. There was no need for recognition, only duty. A duty brought me inside. Lycophos wasn't the border. The streets were crowded. Merchants shouting over one another, soldiers moving in tight clusters, never far from the officers. The air smelled of incense and roasted meat instead of ash and wet leather. Fires burned in open hearths, not for the survival, but comfort. The building was stone, carved with patterns, decorative, not useful. This wasn't a place preparing for war. It was built to be seen. But it didn't matter. The walls were just as much a cage as the borderlands, and I was just as much a prisoner here as I was out there. And the queen was waiting. And the queen was actually waiting. At the inner gate, the guards did not bother to stop me. They didn't need to. No questions, no words. Just a shift to let me through. The streets narrowed as I moved deeper. Quieter now. Clean stone underfoot, polished for people who kept their boots cleaned. Now the air felt heavier, while the walls were pressing in. Not enough to slow me, just enough to notice. I did not look at the nobles, but I knew they were there, behind the windows, behind silence, watching. They were always there. By the time I reached the palace gates, the sun had set. The city was dim, torches and lanterns casting long shadows. An officer was waiting. One of the queens, though his ranks or silk didn't mean much to me. I started studying him briefly. Quiet, careful. Not like the others. Nothing more to say, I followed. The palace corridors were quiet, not empty, just designed just that way. The tapestry swallowed footsteps, no draught from the windows, no scent of stone. Even the silence felt staged, like everything had been dressed up and scrubbed down for someone else. I followed the officer in front of me, uniform sharp, movements sharper, broad shoulders, old scar near his jaw, just above the collar. He'd worn armor once, and not for show. A knight, maybe. Not anymore. He wore the queen's insignia, but it sat loose on his collar, like it didn't belong. His armor was regulation, older make, polished but not recent. A burn ring wrapped one gauntlet, a rift front pattern. He led me through the corridors slower than I'd walk alone. Every sixth step echoed longer than it should have. Still, no comment. Yeah. We passed through 3 archways, one small courtyard and 2 hall segments that did not belong. Newer stone fitted, never old. Not decorative. Covered something up.
3 checkpoints followed, each manned by pairs, each pair sharp-eyed but quiet. None asked for identification. The final doors were not the grand and audience gates. This was a lesser hall, older, smaller, lined with polished blackstone columns. The officer stopped at the threshold. "She's through there," he said. His voice had weight, but not authority. And then softer. "You remember Crane?" I did not answer. Not until he looked me in the eye. "I remember she left." He nodded. "Didn't far. They gave her maps, desk job, she writes now." That was all. He did not wait for a reply. "You left the field?" I asked. He paused. "I stayed too long." That was enough. I stepped through. The Queen stood beside a long window, arms folded. Posture clipped and clean. No wasted movement. The light caught her jawline, sharp and still. She had not changed much. Only the quiet parts of her had aged. I caught sight of a figure near the far wall, cloaked, still head lowered. Not a guard, though. For a moment I almost took it for one. But there weren't any. Just her golem standing nearby, and a few others whose purpose was not clear. And I looked away. "Avera," the Queen said, half-turned. I stopped 4 paces in. "Your Majesty." She did not respond right away. Didn't offer wine or pleasantries, and that wasn't her way, not with me. "I gave you one task. And it's done." Her eyes did not blink. "Then why are my border scouts still dying?" I did not respond. I let the quiet do it for me. She moved past me, stopped at a wide table cluttered with maps, sigil tokens, and a sealed iron scroll tube. Her hands were bare. "There was summoning," she said. "Outside command, not sanctioned, went through before the rite was stable." "Where?" "In the old chapel, beneath the West Archive. 2 casters dead, 1 missing." "Oh, she's a queen, right? Then I should change my accent." "The invocation seal was Rumeline. Ancient script. Our archivist couldn't read the full ring." I didn't ask how, I waited. "There was three summoned," she continued. "Only 1 stayed. We've given it a designation." I stepped closer. What designation? She didn't hand over the sealed parchment on the table, just gave me a response. "Don't be curious. Don't be too curious." The golem in the corner shifted slightly. I looked at the Queen. "Still here?" "Contained," she said, temporarily. My eyes drifted back to the corner, not to the golem. "Who's that?" Her voice tightened. "Translator. Doesn't speak. Didn't leave that after the ritual. We've kept them inside the hole since." And I didn't ask why. She gestured towards the scroll tube and I opened it. Not a map, a report, and 3 lines. "Initiation complete. Seal variant unknown. Containment weakening." The last line was new, a fresh ink. I rolled it back up. "So, what do you want me to do?" She studied me for a moment, and that habit, measuring cost, not loyalty. "I want you to take the translator, Galliolan, will brief you on the movements. There's a village east of the range, 2 days by horse. We trace the sigil source there. I want answers, clean ones. And if it's not clean?" Her gaze did not change. "Then make it disappear." I turned to leave. "You'll need this," she said, quiet now. She slid a small iron case around the table, unmarked, locked. "Don't open it unless you have to." I took it without asking. She stepped back towards the window. "Maybe I'm wrong. There's something more you need to know about the summon. Its record. We've actually figured out its number." She did not turn around when she finished. 201, and that makes her number Xeno. Wow. Okay. Ooh, okay. Oh, interesting. Oh wait, oh damn, I didn't scroll it, so you guys can see what comes after this. Wait. Okay, wait. Not me. This, yeah. So I see my name here.
Sai, I see my name. Number Xeno. Why number Xeno? I'm curious. I got isekai. Oh, it's an isekai. Okay. Cool. So from the story, what I can make out is that, yeah, I have bunny ears. Anyways, so what I can make out from the story is that I feel like there's knights, there are armor, there's war going on, and it looks like this is a region. We know what this region is called. It's a number, the 201th summoned character. Oh. Okay, so basically I'm a character who gets summoned in this world, and this world doesn't seem like it's new. It looks like the 18th or the 16th century, if I'm not wrong. It looks like the world where, and this world is very aware of the fact that people get isekai to their world. I mean, इनको पता होता है कि ये लोग आने वाले, is it not? And who is the person? ये story first person में है. And I'm very curious to know who the first person is. Who's the first person? Yeah, who's the first person? Is it yours? Are you the first person? Xeno family honge kya? That's a nice question. It's your guide and master. Oh, wow. I know. I don't want to get it spoiled. I want to spoil it or anything. But now do you have a name? Avera. Yes, I get it. So this guy, how does he look? I'm sorry. I shouldn't. I'm so curious to know. Wow. So I have one story that's a science fiction, another story that's like a detective and I'm a gangster, a third story where it's in an Indian mythological base, science fiction, it's not even a story, it's like an epic. And this is like an isekai. Wow. Brother, okay. I cannot stop thinking about the fact that I have so many fan fictions. Oh Lord. Oh wow. This is so cool. It's a girl. ये थोड़ा disappointing था, but okay. It's a girl. Okay. Cool. I'm excited because it's a girl. Now I need to know like okay. I want to visualize. Oh wait, when did she do the gangster story? She did not do it. I'm done, bro. You joined, I started. Okay, did you even know when Itoshi-sai, do you know when I start my lives? None of you guys show up anyways. It's not my fault. And then you complain that I've been done with it. This is not fair. None of these guys from Discord show up on my live, and then they be questioning why did I finish the story. I can't help it. Rather, I'm disappointed. Pretty much. Actually. Yes, I started at 8 p.m. You think I'm gonna take too long and I'm gonna read the gangster story now? No, of course not. I'm done. I'm done. I'm done with my story. I'm done with the Wattpad. I'm done with Nameless Shadow. I'm not just done with gangster story. I'm done with the science fiction story. I'm done with RPG story. I don't know what to say. So I'm just gonna be like, okay, whatever. But this story was, again, Sai, if you are thinking of continuing this is getting intense and this is getting real good. I want you to continue, and I'm so happy that you're writing. Sai, I'm so happy that you bring up the story. I'm excited to know how this goes forward because isekai hai, so I'm thinking that I will be entering this place. Not sure how I'm going to be acting, but I want to know what happens. And second thing, I अगर title अगर बताना चाहते हो बता दो, नहीं बताना, so you can just say कि I'm not going to tell right now, because even RPG he said that we gonna know in the end of the story. We're not gonna know now. So if you could, I feel like RPG की story होनी चाहिए The Tale of Xeno Matter. So I'm pretty much excited for that. Iski agar naam hai, so do tell me. But I'm so happy, Sai, that you wrote the story for me. And रखना चाहिए ने. अरे इस टाइटल में क्या छुपा है ऐसा? टाइटल में क्या ही छुपाओगे भाई? The Chronicles of Xeno Matter. Oh, this is the Chronicles of Narnia. The Chronicles of Xeno Matter. Ooh. Okay.
okay. No. But I'm gonna leave it to Sai. I know he's gonna sort up. He's gonna think of a grand, really nice name. And if he doesn't want to disclose it, it's okay. So I'm going to. But it's pretty long yeah. So that was the stories that for today. I'm impressed incredibly by all of you guys who are, and I'm impressed for the fact that I did not know you are such good story writers. They're so good. Xeno, can you read my short poem? Of course I can. I read Lee's. JK? Joking? Okay. Well, I was being serious. Don't joke around things like that. I'm being serious when I say I do respect every writer. That's the reason मैंने क्यों ही बनाया है story time channel. It's reason why I've made this is because I want to know, I want to see how talented my Xeno fam are, and they are, and I'm impressed every time I see their stories. So obviously बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि when these people they write, and I wish I'm going to share to more people. I wish people join my life so that they know. So yeah, I said JK for assurance if you say no. देखो 100 stories जो मैंने story time जो idea आया था मिस्टर रॉन को story लिखनी थी, and he loves writing stories, and I think the reason मैंने पूरे का पूरा story time जो channel था वो बनाया इसलिए था because he likes to write stories. उसके बाद then Manil started writing his Wattpad story, and then we had some then I had like I had Tia, Akshay, all of these guys coming together and making fan art for that story. It just became, I'm so proud of the fact that ki kahan se ye shuru hua tha and where it is now. I have like 4 fictions of mine, and Mr. Ron is already thinking of so many of them, and I'm really excited for that. And I wish kash mere paas aur log yahan par join karte jinko main share kar pati. Unfortunately, none of them joined, so I can't help it. But I feel like it's so, I feel very proud of my Xeno fam, and I feel like, and the language these guys use is just, I'm impressed. It's almost like I never have problem कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, and it's like it's in a flow. So I feel really nice. Thank you guys. And the last note would be that thank you so much for being so good to me, and getting these stories to me, making this into such a wonderful life. And I hope maybe next time hoping कि अगली बार is a fan fiction Friday में और लोग हो, because I think they all deserve to know how cool you guys are. So I hope more people join in next time, and yeah, I think that'd be nice to know. It's like watching your children go to college. Truly proud. So not my story. What do you mean by not my story? What do you mean? No. Xeno and Nick. Okay. Oh, that's so sweet. Thank you so much, Nick. It is. I every time I look at, it's on Gmail. Okay. Every time I look at people and every time they send me these stuff, I'm just at awe at how cool these guys are, and I'm just really impressed, and I feel, and it's great to know as a VTuber, it's really nice to get them all together, and yeah. So you've sent me on mail. Yeah, mail पे तो मेरे को दिख नहीं रहा. Nope, I don't see anything. I don't see it, Hunted. I don't see it. It's not on Gmail. Did you send it to the right Gmail? It's my Gmail is xeno.wcp@gmail.com. You will see a Japanese Xeno written there. Because अभी तक मिली नहीं मेरे को. If you know. No way, Hannah story. Are you? तभी मैं sorry कॉस्ट अब किधर गया? But नहीं है मुझे अभी मिली नहीं है. I can't see it. सच्ची बोल रही हूँ, सच्ची. I'm not even lying. The last I have is from Reddit. Yeah.
I'm no kidding, guys. I haven't received your mail. I'm William Afton. I always come back. Yes. Oh no. I don't see a guy. I'm not kidding, dude. I seriously can't see. I'm refreshing it over and over again. I'm refreshing it so many times that मुझे लग रहा है मेरा mouse खराब हो जाएगा. But I cannot. Dropped it off a waterfall. I sent it because my phone dead. So, Kaustubh, can you send? Okay, you sent it on mail. Don't worry, I'm gonna read it tomorrow. अगर आज नहीं हो पाया तो, because I can't see it. I can't see the mail yet. Even if I type in your name, I can't see it. The last mail तुमसे में जो मिला था, it was on May 9th. Yeah. Because as you told me, yes, I know who you are. Oh. So you're right. That is what you're talking about. मुझे लगा अभी भेजा है. Oh, okay. Okay, cool. You can write again. Oh, no, I'm crying. Okay, then. So, wait, someone mentioned Kaustubh. No, just Kaustubh. I don't know about his whole name, but yeah, Kaustubh. 100 story Kaustubh, by the way. Someday, but not today. I'll make it on the spot, but I feel it's half finished. No problem. Jab ye aapka pura ho jayega, you can tell me. Okay, so, with that, I'm going to be calling a wrap today. On the live today. Thank you so much everyone for joining in, and tomorrow I did not put the schedule, but tomorrow is demo drive. Tomorrow's demo drive, so we're going to be playing 4 games. Demo hai sab, but we'll be trying and see ki kaun sa, how is it, do I like them, is it fun to play, so it's going to be fun. Tomorrow's going to be a gaming stream. Kabhi I need rest, guys, and Fanfiction Friday is never going anywhere. So I had to, ya to main live nahi karungi Fridays ko to fanfiction, and that's never gonna change. So tomorrow is demo drive. Yes, it is. So thank you so much for joining in. I jitne log the, jitne bhi the, I hope you guys enjoyed. Me, introvert in school, and in Xeno's live, I'm chill guy. Well, just be chill. That's good. It's nice to know. So I'm glad you're here. You can type all you want here, Nick. Totally. Okay. Bas agli baar pretend mat karna ki you're not Indian. Okay then. Yes, everyone who's new, please do join the Discord. It's fun. Thank you, my cousin, for putting that up. But I hope you guys join in. And oyasumi nasai. Oyasumi. I will see you guys tomorrow. Bye bye. Bye guys. Love you lots. Bye bye.